Start. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार द्रुशेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अभी एक वीक बाकी है, 1 वीक ओनली पेंडिंग। आफ्टर दैट आपका गेट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है मेजरमेंट्स इज अ सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल। सो जितने लोग जल्दी से जल्दी लाइव में आ जाओ बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट स्टार्ट करेंगे बेटा। जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। Okay, you can watch this. So first let us, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो मेजरमेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स है? फर्स्ट विल कवर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो विल ट्राई टू कवर द PMMC and we'll try to cover the moving iron instrument. Next we'll cover the dynamometer and power measurement. Next we will cover the energy meter. Then we'll cover the Wheatstone bridge, bridges, DC and as well as AC bridges. If time permits we'll cover all other remaining topics also. ये majority of the topics मैं discuss करना चाहता हूँ। जितने लोग मुझे लाइव में है मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। आप लोग लाइक बटन मारो। सो वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ। ओके चलो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ब्रिजेस। ओके लेट अस स्टार्ट विद द ब्रिजेस। Let us start with the AC bridge first of all. So this is the AC bridges. Difference between the DC bridge and AC bridge. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। How many of you are from EEE? How many of you are from ECE? एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए। How many of you are from EEE? How many of you are from instrumentation? और how many of you are from ECE? How many of you are from EEE? How many are from ECE? Please make a note of that. Please mention that. ECE. How many are from EEE? Double E. ECE. Okay. Instrumentation कोई है? Okay. चलो. So if you see the DC bridge and AC bridge, the fundamental difference is DC bridge का basic example है Wheatstone bridge. DC bridge का basic example है Wheatstone bridge. And DC bridge is majorly used for resistance measurement. It is suitable for resistance measurement. Next, DC bridges use DC supply and DC detector, whereas AC bridge will use AC detector here. So हम जो यूज करना है इधर AC detector यूज करते हैं. So this is our AC detector. Okay. So AC bridge में बहुत सारा bridges है. This is suitable for resistance, inductance, capacitance, quality factor,
dissipation factor, relative permittivity measurements. So that is the purpose of AC bridge. And AC bridge के लिए हम AC supply use करेंगे, DC bridge के लिए हम DC supply use करेंगे. So अगर मैंने AC bridge use कर रहा हूँ, then definitely good evening to one and all. अगर मैं AC bridge use कर रहा हूँ, AC bridge के लिए definitely there is a frequency concept will be there. So that frequency accordingly different types of bridges are present. Okay. So first let us start with the comparison. So if you see the comparison here, DC bridge and AC bridge का comparison देखो. DC bridge में हमने DC supply use कर रहे, frequency 0 Hz है, DC detector है, PMMC use कर रहे, क्योंकि DC value measurement करने के लिए केवल PMMC use करना पड़ता है. Whereas AC bridges के लिए different types of detectors are present, but DC bridge के लिए only DC detector. So bridge balance condition here is R1 R4 is equal to R2 R3 and only resistance measurement is possible here. Whereas AC bridge के लिए AC supply use कर रहे, AC supply and different frequency ranges के लिए different detectors use कर रहे according to frequency range, and the bridge balance condition is Z1 Z4 is equal to Z2 Z3 and θ1 plus θ4 is equal to θ2 plus θ3 as per the phase angle. That is the AC bridge का major डिफरेंस. डीसी ब्रिज में केवल प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म्स इक्वल होता है तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एसी ब्रिज में एडिशन टू ऑपोजिट आर्म्स इंपिडेंसेस उसका फेज एंगल्स का समेशन भी मैच होना है. ओके चलो. एंड व्हाट आर द मेजरमेंट्स? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर, डीएफ फॉर डिसिपेशन फैक्टर. सो दिस इज डिसिपेशन फैक्टर. And epsilon r is a relative permittivity. So this is the relative permittivity of the medium. So मैं क्लास स्टार्ट करने की पहले ही मैंने कमेंट्स को देखा हूँ. So कमेंट्स में एक बच्चा पूछा सर AC bridges स्टार्ट करो. So that's why I starting for the AC bridges. क्लास एक्चुअली 4 बजे को स्टार्ट करना है. This class will be useful. See, time is precious. ज़्यादा don't use this time for the waste of doubts. Okay. If you are coming for the gate preparation का लाए तो gate का doubts पूछो. Okay. बहुत सारा कंटेंट बाकी है, बहुत सारे बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर. सो उसको पता है मेजरमेंट्स का वेटेज कैसा होता है, मेजरमेंट्स का इजीनेस कैसा होता है. मेजरमेंट्स को अगर मेरे क्लास पढ़े तो मेरे क्लास में डायरेक्ट डैम श्योर क्वेश्चंस आएगा. सो ऑल दोस क्वेश्चंस आई वांट टू इंट्रोड्यूस. सो डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट फॉलो मी. ओके चलो प्लीज no need to make a note of it, just follow my class. I'm going to take class around 2 to 2.5 hours. In 2 to 2.5 hours I'm going to give the brief introduction about all. Now let us move for the detectors. If you see the detectors, different detectors. Vibration galvanometer is suitable for 2 to 100 Hz frequency. Headphone galvanometer is suitable for 250 Hz to 4 kHz frequency, and tunable amplified galvanometer is suitable for 10 Hz to 100 kHz. And next, CRO is suitable for megahertz. For very high frequency signals, we can use the cathode ray oscilloscope. Okay, so these are the AC bridges detectors. Now let us start the AC bridge classification. If you see the AC bridge classification, so what is the list? So the first one is a Maxwell inductance bridge. Maxwell inductance bridge. Okay. This is Maxwell inductance bridge. First one. Second one, Maxwell inductance capacitance bridge. Maxwell inductance capacitance bridge. Capacitance bridge. Next comes the Hayes bridge.
Next comes the Owens bridge, sorry, Anderson bridge. Anderson bridge. Next one is the Owens bridge. Next, 𝐂𝐸𝐻𝐿 bridge. Next, 𝐷𝐸𝐿 bridge. Next, sharing bridge. So these are the major bridges that can be expected in the exam. Is this the final phase of this session? Yes, आज एक ही सेशन है, कल एक्चुअली अदर सेशन स्टार्ट होगा, अभ्यास सेशन, ये रिवीजन सेशन है। रिवीजन में मैं टॉपिक्स को बोलना चाहता हूं। ओके, सो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज अगर ध्यान से देखो तो दिस टू आर सुटेबल फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट, सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट, लेकिन फॉर द कॉइल्स हुज क्यू फैक्टर इज मीडियम क्यू फैक्टर, whose Q factor is medium Q factor, so it is for medium Q factor. It is for medium Q factor. Okay, so Maxwell inductance bridge is suitable for inductance measurement. ये inductance measurement के लिए suitable है and उसका Q factor medium होना है। so कैसे remember करना, मैंने बताया आपको क्लास में, Maxwell में फर्स्ट लेटर M है, इसमें medium Q factor में फर्स्ट लेटर M है, ऐसा रिमेंबर कर सकते। नेक्स्ट, हेस ब्रिज इज आल्सो फॉर सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट एंड उसका क्यू फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 10, उसका क्यू फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 10, सो इट इज फॉर हाई क्यू फैक्टर, H स्टैंड्स फॉर हाई क्यू फैक्टर, सो आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं, हाई क्यू फैक्टर, इट इज सुटेबल फॉर हाई क्यू फैक्टर, Hayes bridge is suitable for high Q factor. Okay, next Anderson bridge also self inductance measurement, लेकिन उसने Q less than 1 के लिए suitable है। कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, मैंने बताया क्लास में सन है, सन इज ऑलवेज लेस देन द फादर, सो फादर को हम नंबर 1 बोलते हैं, घर में फादर को नंबर 1 पोजीशन देते हैं, सो सन इज ऑलवेज लेसर देन द फादर, सो उसका Q फैक्टर लेस देन 1 है। दैट मीन्स Anderson bridge is suitable for the inductance measurement whose coils self inductance is less than 1. So these are the tips. आज का क्लास में जो बोल रहा हूं वो क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की चांसेस है, सो वो क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हैं हम, लेकिन ये टेक्निक है, ये महा रिवीजन का क्लास में हम क्या देते हैं ना, टेक्निक्स देते हैं। यस यस, वेरी गुड सृष्टि। हेस ब्रिज इज फॉर हाई, एंडरसन ब्रिज इज फॉर लेस देन 1, एंडरसन में सन है, सन इज ऑलवेज लेस देन फादर, अगर फादर को हम नंबर 1 बोला, सन इज लेस देन 1, समझ गए आपको बेटा? All of you understood? And Q is lesser than 1, that is important. And one more point here is Anderson में first letter A है, it is suitable for accurate measurement. It is suitable for accurate measurement of self inductance. Next, Owens bridge is also suitable for inductance measurement, but it is suitable for inductance incremental or decremental. ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसके अनुसार ये भी हम देख सकते हैं L प्लस और माइनस डेल्टा L, सो दिस इज फॉर इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल, उसका भी Q लेस देन 1 है। नेक्स्ट, वीन्स ब्रिज फर्स्ट लेटर W है, इट इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, W इज इक्वल टू 2πf, सो वीन्स इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। नेक्स्ट, डी-टी ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज दोनों कैपेसिटेंस के लिए सुटेबल है, कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए, सो इन एडिशन टू दिस डिसिपेशन फैक्टर आल्सो मेजरेबल, हियर आल्सो डिसिपेशन फैक्टर इज मेजरेबल एंड एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो मेजरेबल। सो ये पर्टिकुलर स्लाइड से आपको कितने बार आपको गेट में क्वेश्चंस आ गया, अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे, एक बार नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आ गया, सो मेनी टाइम्स। यस, W फॉर वाइफ के पास फ्रीक्वेंसी रहता है, सब कुछ ट्यूनिंग चलता है इधर। ओके, सो ये पूरा स्लाइड है ना, ये स्लाइड आप 1 मिनट के अंदर, आई एम गिविंग 30 सेकंड्स और 45 सेकंड्स ऑफ टाइम, एक बार ये पर्टिकुलर स्लाइड को आराम से देखो। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन।
चलो ओवन्स ब्रिज में क्या है, ओवन आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में हम हीट को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, समझ गए। माइक्रोवेव में हम हीट को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, that means incremental or decremental. So that's why Owen's bridge is also suitable for self inductance which are incremental mode or decremental. I mean whenever the inductance is changing incrementally some 0.1 millihenry or 0.5 millihenry or decrementally, so उसको measurement करने के लिए हम Owen's bridge suit करते हैं। चलो now इसके अनुसार हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आई विल स्टार्ट द क्वेश्चंस, इसके अनुसार क्या क्या क्वेश्चंस आ गया, आई वांट टू गिव द क्वेश्चंस नाउ, सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास 1991 का सवाल है, आईआईटी मद्रास 1991 का सवाल है, जल्दी बताओ बेटा। फटाफट आंसर दीजिए आप। सी केल्विन्स डबल ब्रिज, वीन्स ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। क्या इतना टाइम देख रहे हैं आप, फटाफट आंसर कर सकते हैं। मैक्सवेल ब्रिज इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, दैट्स इट। नेक्स्ट शेयरिंग ब्रिज इज फॉर कैपेसिटेंस, दैट्स इट। नेक्स्ट वीन्स ब्रिज इज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, दैट्स इट। केल्विन्स डबल ब्रिज इज फॉर लो रेसिस्टेंस मेजरमेंट, दैट्स इट। सो P goes to 4, Q goes to 3, so option C is the right answer, ऑप्शन C is the right answer। चलो और एक क्वेश्चन करवाएंगे। So, answer this question। IISc बैंगलोर 1996 का सवाल है, लिस्ट 1 and list 2 मैच द पैरामीटर विद द टाइप ऑफ ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। Low value of R, high value of Q, inductance L, capacitance C, sharing bridge, Maxwell's Wien bridge, Kelvin's double bridge, Hayes bridge। high value of Q डायरेक्टली आप दे सकते हैं, high value of Q लिए S जा सकते हैं। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बोलो तो शेयरिंग जा सकते हैं, लो वैल्यू ऑफ बोलो तो केल्विन को जा सकते हैं, हाई वैल्यू ऑफ Q मींस मैक्सवेल को जा सकते हैं। हाई वैल्यू ऑफ Q गया ना, इंडक्टेंस के लिए Q के पास जा सकते हैं, दैट्स इट। आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने दिया आपको टाइम, दिया मैंने आपको टाइम के अनुसार आप कर सकते हैं। P goes to 4, Q goes to 3, R goes to 1, S goes to 2, वेरी गुड, नाइस। चलो और एक क्वेश्चन करवाएंगे, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, मेक इट फास्ट। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है, आईआईटी दिल्ली 1998 का सवाल है। देखो मैंने एक स्लाइड से, केवल एक स्लाइड से एसी ब्रिजेस में कितना सारा बिट्स आ रहे हैं, कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आप। सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, एंडरसन, वीन, रॉबिन्सन, कैम्बल, शेयरिंग। इसका आंसर क्या हो सकता है? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम एंडरसन के पास जा सकते हैं, कैपेसिटेंस के लिए हम शेयरिंग के पास जा सकते हैं, म्यूचुअल फ्रीक्वेंसी के लिए वाइफ के पास जा सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैम्बल के पास जा सकते हैं, दैट्स इट। कैम्बल ब्रिज हमने सिलेबस में नहीं है, लेकिन समटाइम्स मैच द फॉलोइंग में ऐसा होता है, वन ऑफ द कंपोनेंट अगर आपको अननोन में भी दे सकते हैं, लेकिन मैच द फॉलोइंग के लिए आपको 4 की आंसर्स मालूम होना जरूर नहीं है। नो नीड टू नो द 4 ऑप्शंस, ओके, एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू सी 3 ऑप्शंस आपको आंसर आएगा। अरे ऐसा फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछे, मेरा सब्जेक्ट मेजरमेंट से, मेजरमेंट चल रहा है, मेजरमेंट्स का टाइम विड्थ बहुत कम है, मेजरमेंट्स खत्म करना है। आप क्या क्या पूछ रहे हैं यूट्यूब में ऐसा? इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मेजरमेंट्स प्लीज कमिट, ओके। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे भैया।
सो IISc बैंगलोर 2002 का सवाल है, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर, जल्दी बताओ। IISc बैंगलोर 2002 का सवाल है, लाइक्स मार दो, पूरा रेड बना दो, पूरा लाल बना दो सेशन को। विंग्स ब्रिज इज बेस्ट सुटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डैश। IISc बैंगलोर 2002 का सवाल है। अगर मेरा मेजरमेंट्स का आज का रिवीजन सेशन से आपको गेट 2025 में एक क्वेश्चन आ गया AC ब्रिजेस में, देन डेफिनेटली दिस इज द एरिया, मैच द फॉलोइंग और द टाइप ऑफ द ब्रिज और द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिज। इसका आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी। वाइफ के पास फ्रीक्वेंसी रहता है। विंड ब्रिज में फर्स्ट लेटर W है, W बोलो तो वाइफ है, वाइफ के पास फ्रीक्वेंसी मिलता है। ऑप्शन ये। चलो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखो कितना सारा क्वेश्चंस आ गया, बहुत सारा क्वेश्चंस हमको इस ब्रिज पर आ चुका है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? द ब्रिज मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। IIT दिल्ली 2012 का सवाल है, 2012 का सवाल है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। एक कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच द एंटायर सब्जेक्ट हियर। जो कॉन्सेप्ट रिपीटेडली आ रहा है उस कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। ये क्या है? द ब्रिज मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा सिलेबस में नहीं है बेटा। सो शेयरिंग ब्रिज इज सुटेबल फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट, डिसऑर्डर ब्रिज इज सुटेबल फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट, वीन्स ब्रिज इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ये कौन है? कैम्बेल, डेर्मी, वेस्ट इंडीज का बैट्समैन। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दैट्स इट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो so most of all the questions come from that area. Okay, chalo how to answer this question? IIT खड़गपुर 2006 का सवाल है। IIT खड़गपुर 2006 का सवाल है। द आउटपुट रेसिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स 1,2 डीसी ब्रिज क्या है? ये डीसी ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। सिद्धार्थ गौतम जी, आंसर बताओ भैया। द आउटपुट रेसिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स 1 and 2 of the DC bridge in the figure is dash. So this is a combination of network theory question and measurements question. इसको कैसे सॉल्व करना है? It is a combination of network theory and measurements question. So how to solve this question? आंसर बताओ भैया जल्दी। हाँ, वोल्टेज डिवीजन रूल बोल रहे। ओके, SS मुकुंद बोल रहे वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, से देखो भैया क्या हो रहा है इधर। सो इफ यू शॉर्ट दिस, if you short this particular thing, then this 20k and this 30k will be in parallel. So this 20k and this 30k in parallel. Next, this 25k and 25k will be in parallel. So this 25k and 25k will be in parallel. So क्या होगा? R equivalent क्या होगा? So 20k into 30, 20 into 30 divided by 20 plus 30 plus this is 12.5k. So answer will be how much? 600 by 50. So 12 plus 12.5. So 24.5 kilo ohms. So the right answer is option B is the right answer. Let us go for one more question. देखो इतना सारा मेहनत करके जाने के बाद भी हमको गेट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो IIT खड़गपुर 2006 में ये सवाल पूछा है। IIT खड़गपुर 2006 में ये सवाल पूछा है, कैसे सॉल्व करना है इसको? R1 R4 are the opposite arms of the Wheatstone bridge as R3 and R2. The source voltage applied across R1 comma R3 under balanced condition. Which one of the following is true? I think everybody knows this fundamental bit.
everybody knows this fundamental bit, right? So everybody knows this. So sometimes itna easy questions aane ki chances hai gate mein. So we can take that as product of opposite arms must be equal. R1 R4 must be equal to R3 R3. So from this we can take R1 into picture. So R1 kya hota hai? R2 R3 by R4 ho sakta hai bas. So the right answer for this question is R1 R4. Option B है ना? अरे देखो भाई टिल्लू भाई, अरे डीजे टिल्लू भाई देखो आईआईटी खड़गपुर 2006 में आवा है, मैं मजाक कर रहा हूं क्या? आप ओपन करके देख सकते हैं, गेट का पीवीक्यू पेपर आपके पास रहेगा, ऐसा बोल रहा मैंने। मेजरमेंट्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मेजरमेंट्स में ऐसे ही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आजकल। मैं क्या पूछ रहा हूं, हमारे प्रूफ के साथ मैं डाला इधर, फिर से आप टिल्लू भाई क्या बोल रहे हैं आप? चलो चलो आईआईटी बॉम्बे 2013 का सवाल है, ऐसा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है जल्दी बताओ बेटा। कितने लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे? इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं सृष्टि जी, टिल्लू जी। A strain gauge forms one arm of the Wheatstone bit shown in the figure. So these are strain gauge, these are 300 ohms. So ये क्या बोल रहा है? This is the 300 ohms resistance. Okay, these are 300 ohms resistance. Other bridge resistances are 300 ohms. So this is also 300. So this is also 300. This is also 300. This is also 300 ohms. Okay, the other bridge resistors are also the maximum permissible current through the strain gauge is 20 milliamperes. So the maximum permissible current through the strain gauge is 20 milliamperes. आपको ये याद रखना है, the maximum permissible current will go only when the strain is not applied. अगर strain apply करने के बाद उसका resistance increase होगा, when resistance increases, the resistance increase means current will decrease. So maximum current is 20 milliamperes at under normal conditions. Okay, and the strain gauge resistance increased by 1% over the nominal value. So first of all, ये problem में supply voltage not given. When supply voltage not given, what to do now? So if this is 20 milliamperes, so this should be 20 milliamperes under the normal condition. Then definitely this should be the 40 milliamperes. This should be the 40 milliamperes. So now 300, 300, 600, 600, 600 parallel. So that will be 300. So the supply voltage will be how much? The supply voltage is VI, and this is 40 milliamperes. Okay, and this is 300 ohms. So the VI will be what? 12 volts. Am I right? VI will be 12 volts. Then what is telling? The resistance is changing by 1%. So the delta R is 1%. Delta R is 1% of R. So that I can take it as 1 by 100 of
300, so that will become as 3 ohms. Okay, so now in a Wheatstone bridge, please make a note of this point. In a Wheatstone bridge where all the resistors are equal, in a Wheatstone bridge where all the resistors are equal and one of the resistance is changing by delta R, Wheatstone bridge where all the resistors are equal and where one of the resistance is changing by delta R, so then the Wheatstone bridge output voltage given by quarter bridge formula we can use. So V quarter bridge is equal to Vs into delta R by 4R plus 2 delta R. So आप directly आप substitute कर सकते हैं. Okay, so this is 12, delta R is equal to 3 ohms, 4 into 300 plus 2 into 3 ohms. So this is 36 divided by 1200 plus 1206. So कितना आ रहा है? कैलकुलेट यूज करना जरूरी है, एक्यूरेट आंसर के लिए कैलकुलेट यूज करना है. सो 29.85 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं. एग्जैक्टली कितना आंसर आ रहा है? 29.85 मिली वोल्ट्स आ रहा है. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. अरे यार पीडब्ल्यू में आके बाल वाइट हो गया सर. अब कौन मैं ऐसा नेचुरल रहता हूं ना, मैं ऐसा डाई नहीं डालता हूं, कलर नहीं डालता हूं. हाँ, इसकी वजह से वो आराम से ऐसा ही होगा. ओके, हाँ क्वार्टर है, क्वार्टर नहीं कर सकते, कर सकते भैया. दिस एक्यूरेट फार्मूला, दिस एक्यूरेट फार्मूला, दिस एक्यूरेट फार्मूला. जनरली 4R is greater than 2 delta R, so quarter bridge is equal to Vs by 4 into delta R by R approximately. This is also correct. लेकिन आपको आंसर एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट आंसर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके टिल्लू, बच्चे पाठ के बिना सब कुछ देखते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या देख रहे हैं, बाल के बारे में आप सोच रहे हो. चलो आंसर दिस क्वेश्चन. IIT कानपुर 2015 का सवाल है. When Wheatstone bridge shown in the figure is used to find the value of resistors Rx, the galvanometer G indicates zero current when R1 is equal to 50. So ये R1 50 है. This R1 is 50 ohms. Next R2 is 65 ohms. R3 is 100 ohms. R4 is, we don't know. R3 is with plus or minus 5% tolerance. Okay, then what is asking the Rx? Tolerance on its nominal value 100 ohms. What is the range of Rx? So ये problems कैसे solve करना है? So we know very well that R1 Rx, so इसको कैसे solve कर सकते हैं? R1 Rx is equal to R2 R3. R1 Rx is equal to R2 R3. You can use the concept now. R1 Rx is equal to R2 R3. So what is Rx now? Rx is equal to R2 R3 by R1. So here the R3 is changing. So R3 is 100 ohms plus or minus 5%. That means 100 plus or minus 5. 5 by 100 to 100. Okay, that means it will be 95 to 105. So if you keep that, R2 कितना है? 65. R3 कितना दे सकते हैं? R3 95. R1 कितना है? 50. 2 65. R3 कितना है? 105. एंड ये कितना है? 50. सो कितना होगा भाई आंसर? आंसर करके बताओ बेटा, जल्दी बताओ. 65 into 95 divided by 50 is coming 123.5. Next 65 into 105 divided by 50, so that is coming as 136.5. Okay, so the right answer is 123.5 to 136.5. Option A is the right answer. Bridges. Chalo, let us move for the next topic, measuring instruments.
चलो, in the measuring instruments, the next topic I'm starting as measuring instrument. जल्दी ज्वाइन करो बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, measuring instruments. In measuring instruments, there will be three classification. One is the indicating instrument, recording instrument and integrating instruments. Indicating instruments में क्या क्या आएगा, हमको PMMC आएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट. इंडिकेटिंग मीन्स पॉइंटर मैकेनिज्म. अरे मुझे कुछ फैन नहीं चाहिए, कुछ एसी भी नहीं चाहिए, जस्ट बस स्टूडेंट्स चाहिए. बस आपको गेट में रैंक आए तो आपका पापा के पास जाके, मामा के पास जाके, मैं आपका बड़ा फैन हूं ऐसा बोलो. ओके, मुझे कोई फैन नहीं चाहिए, मुझे कोई एसी नहीं चाहिए. इवन द समर इज कमिंग, आई डोंट रिक्वायर, बिकॉज ऑलरेडी मेरे घर में बहुत सारा फैंस है, बहुत सारा एसी है बेटा. ओके, चलो. इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलो तो क्या है ना, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर मैकेनिज्म होता है, वो प्रेजेंट वैल्यू को दिखाता है. इट कैन नॉट शो यू द पास्ट वैल्यू, इट कैन नॉट रिकॉर्ड इट. सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाते हैं. सो देयर इज सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क. इसमें बहुत सारा लिस्ट है, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ना, करवाता हूं भैया ठिल्लू भाई. अरे ठिल्लू भाई जरा रुको ना भैया, 2 घंटे क्लास में आप 20 मिनट में खत्म करने को बोल रहे हैं आप. जरूर रुको. सो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड ए पर्टिकुलर वैल्यू, दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड ए पर्टिकुलर वैल्यू. सो फॉर ए मूवमेंट ऑफ टाइम, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, they are going to record it. So what are the things? CRO and ECG, electrocardiogram. So आपको electrocardiogram भी पता होना है. So electrocardiogram is a like signal like this heartbeat waveform. So these all are common as recording instrument. Next, integrating instruments will accumulate the values. Okay, integrating instruments will accumulate the values. इसमें रीडिंग का अक्यूमुलेशन होता है, मीटर का रीडिंग अक्यूमुलेशन होता है. उसके एग्जांपल्स है एनर्जी मीटर एंड इसके एग्जांपल है ओडोमीटर. ओडोमीटर इज सुटेबल फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट. आपका बाइक का डिस्टेंस कितना चल रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए ये यूज करते हैं. चलो, नाउ इसमें हम मेजरली measuring instruments में first we will talk about these torque formulas. So I want to directly go for the torque formulas. So these are the torque formulas. So if you see the torque formulas, so in all measuring instrument there is a deflection torque, there is a deflection torque and there is a controlling torque. So for deflection torque बोलते हैं. Next, TC stands for controlling torque. Controlling torque. ओके, सो पीएमएमसी में फिक्स्ड पार्ट कौन है, परमानेंट मैग्नेट है. मूविंग पार्ट कौन है, कॉपर कॉइल है. एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला है बिना है. ओके, whereas controlling torque for all these things, for controlling torque same है. So controlling torque we can take it as kc theta, and here also we can take kc theta, and here also we can take kc theta, where kc is the spring constant. Okay, so majorly, okay, PMMC में copper coil is a moving part, deflection torque is बिना. ओके, मूविंग आयरन के लिए आयरन डिस्क का फॉर्मूला हाफ आई स्क्वायर DL बाई डी थीटा. सो ये आप याद रखना है फॉर्मूलास. कैसा याद रखना मैं बोलता हूं, टेक्निक भी बोलता हूं. सी, डिफ्लेक्शन टॉर्क फॉर पीएमएमसी को क्या होता है ना, डिफ्लेक्शन टॉर्क. सो लेट मी राइट, बिना. बिना इज ए हिंदी वर्ड. सो आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं, बिना छोड़ के, बिना छोड़ के. बिना, बिना इज ए हिंदी वर्ड, आप ऐसा याद रख सकते हैं. सो आपका टाइम सेव हो जाएगा. यस, पीएमएमसी में डीसी मेजर कर सकते हैं, पीएमएमसी को फ्रीक्वेंसी मेजर में नहीं कर सकते हैं. पीएमएमसी का कंस्ट्रक्ट ऐसा है, पॉइंटर इज नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट फॉर दी negative signal or the negative polarity signal. That's why PMMC is suitable for DC measurement. Next, moving iron में deflection torque. Moving iron is majorly inductive instrument. That's why it's half I square DL by D theta होता है. Next, इसके बाद हमको आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर. आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर.
Electrostatic voltmeter is a capacitive type of instrument. Capacitive type of instrument. So that's why its formula is 1/2 V square dc by dt आता है. So this electrostatic voltmeter. Moving iron is inductive type instrument. Electrostatic voltmeter is change in capacitance type instrument. Next, whereas dynamometer is different. Dynamometer का formula होगा I square dm by dt होगा. I square dm by dt. So ये formulas आपको याद में रखना है क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क का फार्मूला k बनता है आज को. ओके चलो, नाउ इसके अनुसार हम क्वेश्चंस करवाएंगे. So let us start with the first question. So start with the PMMC. Try to answer this question. Make it fast. IIT दिल्ली 2004 का सवाल है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है, IIT दिल्ली 2004 का सवाल है. आप इतना टाइम ले रहे क्यों? ऑप्शन ये आ रहा है, ए मूविंग कॉइल ऑफ ए मीटर हैज 100 टर्न्स, सो n is equal to 100. नेक्स्ट, length and depth is given, length in breadth, so that is the area is equal to length into breadth, that is 10 into 20 mm, so into 10 power minus 6, so that will become as 200 into 10 power minus 6 meters square. Next, this position is a uniform radial flux density, that is a radial flux density is a B, 200 millitesla. This is a PMMC equation. Okay, the coil carries a current of 50 milliamperes. Then he is asking the torque of the coil in Newton meter. So the deflection torque of formula is nothing but a multiplication of all the data. So if you multiply all the data, you are going to get 200 micronewton meter. So the right answer is 200 micronewton meter. So if you want, you can make a note of this particular slide also. On this slide also many questions are asked. What are the principles involved? So what are the principles involved in each and every instrument? So the principles involved in PMMC, we have involved the magnetic effect. In PMMC, what is the principle involved? In PMMC, we have involved the magnetic effect. Okay,
PMMC is having the magnetic effect. Heating effect is present in thermocouple instrument and hot wire instrument. Electrostatic effect is electrostatic voltmeter. Electromagnetic effect is in the energy meter. Okay. Hall effect is present in the point vector galvanometer. Yes, enough. Okay. So this also please make a note of this. Why? Because sometimes there is a possibility of asking the theoretical questions here also. Chalo, what is the answer for this question? Make it fast. The current I of t passing through the 10 ohm resistor as shown in the figure has a waveform in the figure B. Then the reading of the DC voltmeter connected across the 10 ohm resistor is dashed. वेरी सिंपल की बात है. सो दिस इज आई एवरेज लेना है. सो दिस 12.5 के बीच में चल रहे हैं. सो PMMC मेजर्स ओनली द एवरेज वैल्यू. सो आई एवरेज कितना होगा? 12 plus 5/2 होगा. सो दैट इज 8.5 amperes. So when it is 8.5 ampere, what is the V value? V is equal to I into R. So 8.5 into 10. So the answer is 85 volts. So the right answer for this question is 85 volts. Okay. So one of the important topic in the measuring instruments is the range extension. So how to utilize this range extension for instruments? Okay. So here, see here. What is the range extension concept for the PMMC? Range extension concept for ammeter and voltmeter. So if you see the range extension of the PMMC, range extension for PMMC. PMMC का range extension कैसा होता है? As an ammeter. So how it will be? Range extension of PMMC, how it will be? Okay, can you tell me what is the shunt component? What are the points? So range extension of PMMC ammeter, if you see the PMMC ammeter, so this is our IM, this is the meter resistance RM, and shunt resistance comes in parallel. So this is shunt resistance. So the range can be extended. So this is the I, this is the ISH. So question expected here is the RSH. What should be the shunt component? To extend the range of PMMC, what should be the shunt component? RSH. So कैसे calculate करना है? So I can take RSH as a formula RM by M minus 1. RM by M minus 1, where M is a multiplying factor, so which can be written as I by IM minus 1. So M is called the multiplying factor. So you must remember that. So for examination, this is the most expected question. Okay, so M is called multiplying factor, which is a ratio of I to the IM. So range to be extended, divided by meter current, full scale value of the meter. Okay, so this M is called as multiplying factor, my dear. This is called multiplying factor, one of the important area where the questions can be asked. Similarly, if you go for the PMMC voltmeter,
range extension for PMMC voltmeter. So क्या हो सकता है range extension of PMMC voltmeter? देखो, so this is our IM, this is our RM. Okay, so in addition to this, we are going to attach a series resistance. We are going to attach a series resistance RSE. So what is the value of the series resistance? So a series resistance, yes, shunt value is going to be lesser. RSH is going to be lesser, then only maximum current is passing through. The meter cannot allow the current, but that's why we are keeping a shunt resistor. A shunt resistor कम होना है, इसकी वजह से maximum portion of the current can be allowed. So what is the series resistance? So the series resistance is given by formula Rm into M minus 1. Rm into M minus 1. This is also one of the expected question. So where M is called capital V by small vm. So this is the range of the voltage to be extended. Range to be extended. Okay, this is the range to be extended. Next is the full scale value of the voltmeter. Full scale value of meter. So M is called multiplying factor here also. It is also called multiplying factor. So PMMC ammeter का फॉर्मूला, PMMC वोल्टमीटर का फॉर्मूला याद रखने की तरीका क्या है? I will tell you the technique. PMMC ammeter में shunt resistor comes down, so इसलिए M-1 comes at the bottom. And PMMC voltmeter में series resistor comes in series, इसलिए M-1 comes in series. ये टेक्निक आप याद रख सकते हैं. So M-1 will be coming in parallel, so in down, and M-1 will be coming in series here. Is it clear? चलो, let us move some questions on this context. बहुत सारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. So what is the answer for this question? IIT दिल्ली 2004 का सवाल है. चलो, a galvanometer with a full scale current of 10 milliamperes has a resistance of 1000 ohms. The multiplying factor for the ratio of measured current of galvanometer of a 100 ohms shunt with this galvanometer is dash. So आपको क्या क्या दिया है? Galvanometer full scale current, this is IM. So आपको IM दिया है 10 milliamperes. Next, resistance of the meter is given as 1000 ohms. Okay, multiplying factor is asking the question. Okay, and shunt component RSH is given. So directly आप ammeter है, so आप formula use कर सकते हैं. RSH is equal to RM by M minus 1. So is asking the M. So आप आराम से RSH is given as 100 ohms, right? So RSH का value 100 ohms दिया है. So this is 100 and meter resistance 1000 है. So this is M minus 1 है. So this gets cancelled. So M कितना आएगा? M is a multiplying factor. M is equal to 11 आएगा. Option C is the right answer. Okay, चलो one more question solve करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस के लिए. What is the answer for this question? IIT कानपुर का सवाल है, जल्दी बताओ.
क्या होता है 100 microamperes ammeter. So when you mention 100 microamperes, better I suggest you, when you're solving these questions, I suggest you to draw the diagram. I suggest you always to draw the diagram, my dear. Always suggest to draw the diagram so that no confusion. 100 microamperes ammeter. So these are IM आप ले सकते हैं. Internal resistance, these are RM ले सकते हैं. Okay. And its range to be extended, so it is a shunt resistance ले सकते हैं. So these are RSH. Okay. So this is I. 100 microamperes ammeter. So we can take this as 100 microamperes. Meter resistance is 100 ohms. Next, measure 500 microamperes. These are 500 microamperes. So RSH is asked. That's the best, safest way to solve the problem. RSH is equal to RM by M minus 1. RM is 100. M is equal to I by IM. I is equal to 500 microamperes. This is 100 microamperes minus 1. So answer is 100 by 4. Exactly 25 ohms are. Option C is the right answer. Option C will be the right answer for this question. Okay. What is the answer for this question? IIT कानपुर 1995 का सवाल है. कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को? It won't deflect. It won't deflect. The pointer will damage. If you give continuously the AC supply, the pointer will damage. What is the answer? 200 volts full scale PMMC type DC voltmeter having figure of merit of 10 kilo ohms per volt and 20 kilo ohms per volt connected in series. The series combination can be used to measure a maximum DC voltage of dash volts. ये कैसा solve करना है? So first of all, what is the figure of merit of first one? So if you take the first voltmeter, this is the first voltmeter I will take. And this is second voltmeter, 2 voltmeters. The 200 volts first voltmeter 1, so iska 100 volts है full scale value. Its full scale value is 100 volts and its full scale value is 100 volts. 200 volts full scale PMMC type DC voltmeter having a figure of merit. So this figure of merit of 1 is how much? 10 kilo ohms per volt, and the figure of merit of 2 is how much? 20 kilo ohms per volt. So इसका मतलब क्या है ना? To represent 1 volt, that meter requires a resistance of 10 kilo ohms. Here to represent 1 volt, the meter requires a resistance of 20 kilo ohms. But what is the full scale value? 100 volts. So for 1 volt, if it requires 10 kilo ohms, for 100 volts what happens? It requires 1000 kilo ohms. Next, for 1 volts it requires 20 kilo ohms. So for 100 volts it requires 2000 kilo ohms. Now the series combination can be used to measure a maximum DC voltage. So if you take the series combination of these two, so this meter 1 and this is a meter 2. So the series combination, if you take, so if you take the series combination of these two, so here comes the R1 as how much, and here take the RM1, RM2. So these are meter resistance 1 and meter resistance full scale value 1000 kilo ohms. So these are 1000 K and this is 2000 K. And the current passing here is what?
That is a question. So if you know this current, you can find out the voltage across this resistance. Okay. Figure of merit is called sensitivity. Figure of merit is also called sensitivity. Figure of merit is also called sensitivity. Sensitivity is equal to 10 kilo ohms per volt. So agar if you take the inverse of this sensitivity 1 by S, that is coming as full scale deflection current. So that is 1 volt per ohm, that is ampere, kilo means milli. So this is going to become 1 milliampere, sensitivity of the first one and IFST of the first one. Figure of merit is called sensitivity. That means how far your voltmeter sensitive. How far your voltmeter is sensitive. Okay. Next, if you see this particular second one, sensitivity S2, here S2 कितना है 20 kilo ohms per volt. 20 kilo ohms per volt. So 1 by S2, that is a full scale deflection FST2. So that is 1 by 20. 1 by 2 means 0.5. It is going to become a 0.05 milliamperes. You understand or not? Clarity आ गया आपको? Yeah, this is 0.1 milli. Okay, sorry. This is 0.1 milliampere. So this is 0.1 milliampere. This is 0.05 milliamperes. समझ में आपको मुकुंद जी? Figure of merit को आप sensitivity बोलते हैं. How far this particular thing is sensitive? Okay, how far this particular thing is sensitive? So this is 0.1 milliampere. This is 0.05 milliampere. उसका मतलब क्या है ना? ये पर्टिकुलर मीटर के लिए 100 वोल्ट रिप्रेजेंट करने के लिए 0.1 मिली एम्पियर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट चाहिए. 0.1 मिली एम्पियर्स इज द रिक्वायर्ड करंट टू शो ए फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट्स. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर मीटर just 0.05 milliamperes is sufficient. 0.05 milliamperes is sufficient to display 100 volts. Now ये दोनों मीटर सीरीज में कनेक्ट हो चुका है. अगर ये दोनों मीटर सीरीज में कनेक्ट हो चुके तो क्या होगा? नमस्कारम सर, वनक्कम वनक्कम. So when two voltmeters are connected in series, हम क्या ले सकते हैं? We can take two voltmeters connected in series means we can take what? The minimum current networks concept. Two voltmeters connect, so two full scale currents में minimum current ले सकते हैं. So that is a 0.05 milliampere. So then what is the voltage? So voltage is equal to I into RM1 plus RM2 हो सकता है. So what is the right answer here? So this is 0.05 milliamperes into R1, that is 1000 K, plus this is 2000 K. So K and this gets cancelled. So what is the right answer here? This gets cancelled. 1000 plus 2000, 3000. 3000 into this 150 volts is the right answer. So सवाल का आंसर है 150 volts. मजा आ गया? Is it clear, my dear? Yes. Chalo. Let us go for the next question. Can you answer this question? IISc Bangalore 1996 का सवाल है. सोच के बताओ.
आंसर क्या है? Advantage of permanent magnet moving coil instrument is that it is free from frictional error. No instrument is frictional error. No instrument is frictional error. Every instrument is having frictional effect. Has high torque weight ratio, has low torque weight ratio of the moving parts. Can be used for both AC and DC. This is also wrong. So has high torque to weight ratio. Torque to weight ratio कम है? Yes. Why? Because in PMMC we are using copper winding like this. So this is a copper coil. Yes or not? So this copper coil is attached to a aluminum frame. Attached to a aluminum frame like this. It is attached to a aluminum frame. So aluminum frame, and for this we are attaching a pointer. So the pointer is a lightweight. So he is asking about the moving parts. So this is the moving part. So this is the moving part. So this moving part is connected to aluminum frame. So weight कम है, torque to weight ratio. When weight is कम, the ratio is more. So that is the best thing. Moving parts का weight कम है तो अच्छा है. Up, that is advantage. So has high torque to weight ratio is the right answer. That is a major advantage. Theory questions answer करना बहुत मुश्किल है बेटा. Okay? चलो. Answer for this question. 1998 का सवाल है. Yeah, a DC voltmeter has a sensitivity. So sensitivity कितना दिया है? Sensitivity is equal to 1000 ohms per volt. So what is the current? 1 by S. So that is a 1 milliampere. When it measures half of the full scale in 100 volts range, the current through the voltmeter is dash. So this is for a full scale value of how much? 100 volts. Suppose now if it measures 50 volts, then what is the answer? 0.5 milliamperes. Option C is the right answer. Okay, चलो. 2014 का सवाल. Try to answer this question. लेटेस्ट में बहुत कम आया है क्वेश्चन. 2022 2021 में एक ही क्वेश्चन आया है. सो IIT खड़गपुर 2014 का सवाल है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन.
आंसर है. Okay, let us see. Two ammeters X and Y. Let us take X. Let us take Y. Ammeters बोल रहे हैं. So this is RM. This is RSH. This is IM. This is I. Okay. So two ammeters X and Y have internal resistance. RM का internal resistance 1.2 ohms है. So this RM is 1.2 ohms, and let us take this also in the picture. This is IM, this is RM, and this is RSH. So two ammeters X and Y have internal resistance 1.2 ohms, and this is 1.5 ohms. This is 1.5 ohms. Respectively, they give full scale deflection with 150 milliamperes and 250 milliamperes respectively. So this is 150 milliamperes. This is 250 milliamperes. The ranges have been extended by connecting shunts so as to extend to a 15 amperes range. So this is 15 amperes. This is also 15 amperes. So question here is, what is the RSH? First we have to find out. Okay, the ammeters next connected in parallel. Okay, yes, आपको ज्यादा वेटेज है. So कैसा करना है RSH का फॉर्मूला? So RSH का फॉर्मूला कैसा करना है भैया? So RSH here is equal to RM by M minus 1. Okay, so this is meter resistance 1.2, I 15 by IM 15 amperes. This is 15 amperes. This is 150 milliamperes. So 150 milliamperes minus 1. So कितना आ रहा है देखो, RSH कैलकुलेट करो कितना आ रहा है RSH. अब सॉल्व करो भैया. आप ये सेशन प्रैक्टिस की तरफ से सोच लो. यू ट्राई टू यूज दिस सेशन एज अ प्रैक्टिस. ओके, milli, that is 15,000 divided by 150 minus 1. So 1.2 divided by answer. So how much it is coming? 0.0121 ohms आ रहा है. Next, here RSH क्या होगा? Same to same, RM by M minus 1. So this is 1.5 divided by M, I by IM. So 250 by 15 by 250 milliamperes. This is 250 milliamperes minus 1. So कितना होगा? 15,000 divided by 250 minus 1. So 1.5 divided by answer is coming as 0.0254. So here RSH is equal to 0.0254 ohms. So RSH 1 आ गया, RSH 2 आ गया. नाउ ये दोनों मीटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. सो अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गए क्या होगा? Sorry, suppose if they are connected in parallel, what happens? So two ammeters connected in parallel, that means I can take like this. They are connected in parallel. So this is first ammeter. Okay, so this ammeter X. So this is RSH1. So this meter is connected parallel to another meter like this.
Okay, so if you check now, RSH1 is 0.0121 ohms, this is 0.0121 ohms, and this one 0.0254 ohms. This is 0.0254 ohms. And what are the meter resistance? RM1 1.2, this is 1.5, this is 1.2, this is 1.5. So first we have to take the parallel combination of these two. So let us take this as Rx, let us take this as Ry. So both are parallel. So what is the Rx? 0.0121. So it is coming as 0.0119. Next here 0.0254 into 1.5 divided by 0.0254 plus 1.5 is coming as 0.0245. 245. These are 15 amperes current. So these are current passing through the Ix, these are current passing through the Iy. So क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज अ करंट इन एम्पेयर्स इंडिकेटेड अमीटर X. सो Ix का सवाल क्या होगा? अपोजिट रेसिस्टेंस 0.0245 डिवाइडेड बाय टोटल 0.0119 प्लस 0.0245 इंटू I इज इक्वल टू 15 एम्पियर्स. कितना आएगा आंसर? Answer are 10.09 amperes. 10.09 amperes is the right answer. That is the current passing through the Ix. आपने गलत बोल दिया आपने आंसर फर्स्ट. Okay, 10.09 amperes is the right answer. चलो, that's it. This is the questions on the PMMC. So the right answer is 10.09 amperes. The right answer is 10.09 amperes. Now let us move for the next topic, moving iron instrument. If you see the moving iron instrument, next topic is a moving iron instrument. Okay, so PMMC में permanent magnet is a fixed part and coil is a moving part, whereas here in moving iron the fixed part is electromagnet and the moving part is the iron disc. So this is a fixed part and this is the iron disc. So the fixed part is electromagnet. Why it is called electromagnet? Whenever current travels, it acts like a magnet. Okay, so whenever there is a change in current, then there is a change in flux. Because of that, there is a force of attraction. So because of the force of attraction, what happens? This iron disc comes closer. When iron disc comes closer, the reluctance decreases. When the reluctance decreases, the self-inductance increases. Okay, so the inductance is going to be changed. So for a change in current in the particular coil, there is a change in flux, which makes this iron disc to attract. There is a change in force of attraction. We can say there is a change in force of attraction. The force of attraction makes the iron disc comes closer to this. When iron disc comes closer to this, the reluctance is going to be reduced. When the reluctance is going to be reduced, the inductance is going to be happen. So that creates a deflection torque. So the deflection torque is given by formula 1/2 I square dl by d2 d theta. One of the advantage of this particular instrument here is it is suitable for both AC and DC measurements. Very good. It is suitable for both AC and DC measurements. So it is suitable for both AC and DC measurements. So now if you check, the deflection torque is I square dl by d theta, controlling torque is equal to kc theta. So from the steady state, why? Because in all the measuring instruments, controlling torque is kc theta only. So
At steady state, the deflection torque is equal to controlling torque. The deflection torque is given by 1 by 2 I square dl by dt is equal to kc theta. So theta is equal to 1 by 2 I square by kc dl by d theta. So theta is proportional to I square. It is suitable for both AC current and DC, and theta is also proportional to V square. So this is what we call as moving iron ammeter. And this is moving iron voltmeter. Okay. Now, if you see the graph is not a straight line, whereas the PMMC graph is uniform. But here the graph is not a straight line, the graph is like a curve, like this. So it will be having initially crowded values, next it will be having the linear values, and will be having the spacious values. So the initial values are cramped, next are the linear, the next comes the spacious. इसका explanation भी मैंने दिया है. For minimum values of the current, for initial values of the current, the output readings are very close. In the middle, suppose some range is extended to 1 to 1.5, then the readings are proportional. But when it is going to beyond the range 2 to 5, then the reading is square. You understand? So that means what? The scale is completely non-uniform scale. समझ में आपको? The scale is completely a non-uniform scale. So moving iron का scale is non-uniform. Sir, so friction will happen when TD is equal to TC. It's not friction. TD is equal to TC. What happens now? The pointer makes oscillations. At that time, the damping torque comes into picture. When the damping torque makes 0, then the pointer comes to the steady. When TD is equal to TC, what happens now? At steady state, the pointer gets a position. It has to settle a position, but due to some oscillations of damping, it won't settle. When the damping torque becomes 0, the pointer settles. It is not in friction, it is a steady state. Imran bhai. Chalo. Now, let us go for a question on this. So try to answer this question now. IIT Madras 2003 का सवाल है. Self-inductance is expressed as, I think these options are wrong. Some mistake here. Yeah, solve this. Self-inductance is given as what? 10 plus 30 theta minus theta square by 4 microhenry. Option C are. So what is the dl by d theta? We can solve the dl by d theta here.
that will be constant. This is 0, this is 30, this is theta square means 2 theta by 4 microhenry per radian. So 30 minus theta by 2. Next, this Kc is given as 25 into 10 power minus 6 Newton meter per radian. Okay, so now we can write the formula. Td is equal to Tc. So Td कितना है 1 by 2 I square dl by d theta. This is Kc theta. So हमको theta चाहिए. So 1 by 2 here. करंट कितना दिया है 5 amperes. So 25 होगा. dl by dt कितना आ गया 30 minus theta by 2. Kc is what 25 into 10 power minus 6 into theta. If we solve this, we are going to get in the radians theta is equal to how much? Look at the 12 radians. Am I right? 12 radians. Now let us go for range extension of the PMMC. Moving iron range extension. So first of all, moving iron को कैसे represent कर सकते हैं? Moving iron will be having a meter resistance. As it is an inductive instrument, it is also will be having the inductor. So if you check moving iron, so this is the meter. So we can take this as Im and this is the Rm. But in addition to this, it will be having a inductor. Why? Because in PMMC we are having only Rm, but here it is having the Lm, inductor. So now in connection to this, we are going to keep an across a shunt component क्योंकि range extension करना है. So इस time हमको range extension करने के लिए shunt का elements भी एक resistance होना है, एक inductor भी होना है. Am I right or not? So here comes the resistance. This is RSH and this is LSH. Okay, my dear. So this is the picture of meter. So this is the I, this is the ISH. So now if you check the voltage at these two terminals, the voltage here is Vm and the voltage here is VSH. So as both are parallel, we can do this analysis. अब एक बार go through the analysis. क्या कर सकते हो analysis में?
आ रहा है? यस, या रेंज एक्सटेंशन एज अ वोल्ट मीटर. अभी क्लियर है ना वॉइस? चलो, so now if you see the series resistor value we have to find out. So the series resistor value we have to find out. So capital V is equal to I into Rm plus Rsc 𝐂𝐚𝐿m. So I'm taking the ratio capital V to the small vm. Okay, so capital V का फॉर्मूला small vm का फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूट करें तो so क्या आएगा? So small vm क्या होगा? I into Rm plus 𝐂𝐚𝐿m होगा, and capital E का फॉर्मूला I into Rm plus Rsc plus 𝐂𝐚𝐿m होगा. So if you take the ratio of these two, so capital V to the small vm, if you take 2 root over a square plus b square, and two formulas we are going to get. Suppose if it is AC supply, then definitely omega cannot be cancelled. Okay, suppose if it is a DC supply, what we are talking is a DC supply. So for a DC current measurement or a DC voltage measurement, this omega will become 0. If omega is equal to 0, what happens? This term is going to become 0, and Rm plus Rsc whole square will be there, Rm square will be there. So square gets cancelled. So if you simplify, Rs is equal to Rm into m minus 1 हो जाएगा. Got it? Is it clear? So for the DC measurement, it is similar to our PMMC, but for AC it is having omega. So there is a frequency error is possible. Different frequency, different readings is possible. So why the different readings? So if you check now, so this is our IM. So this is our Rm. This is our LM. So this voltage I can take it as VM. Actually this is the VM. So this is our VM. So now if I am attaching a series resistor here, so this is a series resistor. So why the error is coming? Because of the omega. This omega is because of the inductor, am I right? So the different frequency omega, different readings, different frequency is coming because of the inductive reactance. इसको compensate करने के लिए मैं capacitor use कर सकता हूँ. So that's why we are attaching a series for a parallel capacitor here. So this is a parallel capacitor we are using. By using this capacitor, we can compensate the error. So the formula is 0.41 by L by Rsc square. By attaching a parallel capacitor across the series resistor, the error can be compensated. Inductive reactance can be compensated by capacitive reactance. Frequency error caused by this inductive reactance, and it is compensated by capacitive reactance. Okay, ma? Is it clear? So this is all about the moving iron instrument. Now let us go for some more questions on the moving iron instrument. Answer this question.
So what is the answer for this? Thank you. Thank you very much. Thank you sir, कुलदीप sir. यहाँ टीम वर्क चलता है. ओके चलो. A moving iron ammeter produces a full scale torque. What is the full scale torque? 240 micronewton meter with a deflection of 0 to 120 degrees at a current of 10 amperes. The rate of change of self inductance is asking. So direct formula TD is equal to 1 by 2 I square dl by dt. The formula we can use कर सकते. So what is mentioned? Moving iron produces a full scale torque of 240 micronewtons. So that is 240 into 10 power minus 6. This is 1 by 2. And what is the current? Current is equal to 10 amperes. 10 into 10. So question is asking dl by dt. Directly आप call solve कर सकते ना. So 5. This 50 gets cancelled. 5 by 24. So 5 4 ja. So 4.8. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Let us go for one more question. So what is the answer for this question? The sawtooth voltage waveform shown in the figure is fed to a moving iron voltmeter. Its reading would be closest to dash. So always moving iron measures the RMS value, na? Moving iron measures the RMS value. Yes or not? Moving iron measures the RMS value. So moving iron means VRMS. What is the VRMS? What is the VRMS? We can take VRMS is equal to VM by root 3. VRMS is equal to VM by root 3. So I can take it as 100 by root 3. 100 by root 3 means how much we are going to get? Please check. कितना आ रहा है 100 by root 3 बोलो तो. Thank you. Thanks for your support. मेहनत करके बताओ, जल्दी बताओ. 57.73. 57.73. और यह क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं VRMS को. Another way of doing the problem is 1 by t integration of 0 to t v of t whole square dt. So square root of. Okay, so ऐसा भी कर सकते हैं. Am I right? RMG. So let us go for one more question. Try to answer this question. Okay, what is the answer for this question? आंसर कितना होगा? Thank you. A DC voltage with ripple. So V of t is given here. That is 100 plus 10 sine omega t plus 5 sine 3 omega t. Measurement of this voltage is made by moving coil and moving iron. So first PMMC. PMMC means V1 of t, which is the average. So average value means what?
it is 100 volts. It will measure only the DC component, it will not measure the AC component. Whereas moving iron V2 of T, which is the VRMS. So what is the VRMS? Square root of 100 square plus 10 by root 2 whole square 5 by root 2 whole square. So कितना आएगा आंसर? 100 by 250. Please check this by using the calc. $100.312. So he is asking the difference value of V2 minus V1 is asking. So 100.312 minus 100. So answer will be 0.312. Answer कितना आएगा? 0.312 आएगा. चलो. Now let us go for one more question. Try to answer this question. Try to do this and take 10 minutes break. Okay, take 10 to 15 minutes break. After this we'll start dynamometer. Okay, please solve this and take the break.
What is the answer? Anybody saw it? Okay, so if you see here, what is asking? A 0 to 1 question is related to moving iron ammeter. So please draw the diagram. Have an internal resistance of 50 milliohms and inductance of 0.1 millihenry. 50 milliohms and 0.1 millihenry. So this is the RM, this is LM. Its range has to be extended to 10 amperes. So we have to attach, so this is the IM, so I is equal to 10 amperes. So here we are going to get RSH and LSH. The time constant in milliseconds and resistance in milliohms of the shunt coil is dash. So he is asking the RSH. So directly हमने formula use कर सकते हैं RSH का formula. What is the meter resistance? That is a 50 milliohms. I by IM, 1 by 10 by 1, 10 minus 1. So 9, 50 by 9. 50 by 9. कितना आ रहा है आंसर? $5.55 milliohms. So how to find out the LSH? So first we can find out the LM. Tau M is equal to LM by RM. So what is the LM? 0.1 millihenry divided by RM, that is a 50 milliohms. So that comes as 2 milliseconds. So tau M is equal to tau SH. So the right answer is 5.55 milliohms and 2 milliseconds. Option A is the right answer. Clear hai? Chalo. Now let us move for next topic, dynamometer. The next topic I am taking as dynamometer. Now the important topic which can be used for power measurement and energy measurement also. Okay, so dynamometer का purpose क्या है? So if you see the dynamometer, PMMC is a permanent magnet moving coil which is used for DC voltage and DC current measurement. Moving iron is having electromagnet and moving disc which is suitable for both current. Ammeter is only for DC current and DC voltage, whereas moving iron is both for DC current and AC current, DC voltage and AC voltage. Okay, then what is the necessity of dynamometer? Dynamometer का major necessity है power measurement. Okay, so what I am going to do now, it is going to take a feature of electromagnet from moving iron and moving coil from PMMC. ये दोनों मिला के EMMC बन रहा है, that is a dynamometer. So dynamometer will take the both two. Okay, so dynamometer is also called as EMMC. Dynamometer is also called as EMMC, electromagnet moving coil. Okay, electromagnet moving coil. It is not PMMC. It is not PMMC. It is called electromagnet moving coil. So electromagnet is a feature taken from moving iron.
moving coil is a feature taken from PMMC. So it is a transfer type instrument. Why? Because it is tested in DC and calibrated for AC also. So it is suitable for AC current and DC current. So which is called dynamometer ammeter, which is called dynamometer ammeter, and this is dynamometer voltmeter. In addition to this, it is also suitable for power measurement, majorly average power measurement. So that's why it is called dynamometer wattmeter. It is called dynamometer wattmeter. It is called dynamometer wattmeter. Is it clear? Yeah. So now let us see how it works. So the major concept of this is, dynamometer is having, the basic equipment is having like this. This is the basic arrangement of dynamometer. So if you see this dynamometer arrangement, it is having one fixed coil which is split into two parts in which the current will be traveling. So it is called as current passing through the current coil. So this is a current passing through the current coil. It is also called as current coil. Okay. So this is also called as current coil. So this is a current passing here. So this is a current passing here. And there is a moving coil. So the moving coil is also called as pressure coil or potential coil. So between the two electromagnets, क्योंकि अगर electric current जाए ना, when a current travels, अगर current जाए तो क्या होगा, ये दोनों coils will act like a north pole, south pole will act like a magnets. Between the two magnets, one moving coil is suspended. Then because of force of attraction or repulsion, there is a deflection. And this deflection will continue. Why? Because once the current travels, it is north pole, south pole. It is also north pole, south pole, and it is also north pole, south pole. So there is a deflection. And it will continue the deflection for a negative signal also. Why? Because for a positive wave it will respond, and for a negative wave also it respond. For a negative wave it will become south and north, and it also will become south and north. It also will become south and north. Then there will be a deflection. So this deflection is happening because of the mutual inductance between the coils. Self inductance is a property of single coil. अगर मेरे पास multiple coils है तो that is a feature of mutual inductance हो सकता है. So now if you check the mutual inductance phenomenon here, this is a dynamometer concept. So if you take the dynamometer concept, for moving iron, the deflection torque of formula क्या है, 1/2 I square dl by d theta. But whereas for dynamometer, what happens? Same concept, but here how many inductance are present? अगर आपने ये fixed coil लिया and it's a moving coil लिया, fixed coil actually single है, which is split into two parts. So one fixed coil having self inductance and moving coil having self inductance L2. ये दोनों के बीच में सब mutual inductance है M. ये दोनों के बीच में mutual inductance क्या है, M. So what is the dynamometer expression? See here, from moving iron we can take half I square dl by d theta. So L I can take it as what? L is a combination of self inductance and as well as mutual inductance minus 2m ले सकते हैं. This is a minus 2m. So if you take the derivation, this is constant. It is not going to be changed. The only parameter that is going to be changed is the mutual inductance. So 2 comes out, I square dm by d theta is the answer. So deflection torque is I square dm by d theta and the controlling torque is kCt theta. Okay. So if you check now all the derivation, so this is a derivation. So TD, deflection torque is I square dm by d theta, controlling torque is equal to kc theta. So अगर ये दोनों को steady state में लगाओ, at steady state दोनों will be equal. So dynamometer ammeter, which is suitable for I square law, P square dynamometer, this one. So both are suitable for AC as well as DC. चलो done. Up to now clear है? But the basic purpose of this is to measure the power. To measure the power, how it is suitable for power measurement. So see here. So we got the expression as like this. In dynamometer ammeter, what is the concept?
I square dm by dt is equal to kc theta. So theta is proportional to I square. The scale is non-uniform. So the scale is non-uniform. Why? Because this is crowded and this is linear and this is spacious. Crowd, linear, spacious. The scale is non-uniform. Dynamometer, ammeter is non-uniform. Next, dynamometer, voltmeter also same. I square dm by dt is equal to kc theta. If you rate, I can be written as v by r, v square by r square dm by d theta. So theta is proportional to v square. Again, this is a voltage. So this is a dynamometer, voltmeter. Dynamometer, voltmeter, spacious, non-uniform आ रहा है. So the readings are non-uniform. All of you following? जहां जहां आपको स्क्वायर आ रहा है ना, आई स्क्वायर वी स्क्वायर, ये पूरा क्या होगा आपको नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म आ सकता है. लेकिन दिस कैन बी यूजफुल फॉर पावर मेजरमेंट. हाउ इट इज पॉसिबल फॉर पावर? सी हियर. सो पावर मेजरमेंट क्या होता है ना, so the power measurement, the expression will come like this. When you make modifications, the deflection torque will be coming like this. ICC VPC cos phi 1 by r dm by d theta, TC is equal to kc theta at steady state. So this expression is equal to this. So we can make theta is proportional to average power. So that's why if you see the graph of this, we are going to get a uniform scale. The graph of this, we are going to get a uniform scale like this. We are going to get a uniform scale. So theta is proportional to I square. Dynamometer ammeter is non-uniform. Theta is proportional to V square. Dynamometer ammeter is non-uniform. Yes. Power के लिए linear graph आएगा, मैं derivation में नहीं जा रहा हूँ. So theta is proportional to average power. So the average power is given by expression VPC ICC cos phi. So this I can take it as VPC ICC cos phi. So this is a uniform scale. It's a uniform scale. Chalo. Now, what is the average power? VPC ICC cos phi. Now, there is some constructional features of dynamometer wattmeter. So if you see the features of dynamometer wattmeter, before going to that, you should understand what is a pressure coil and what is a current coil. So if you see this picture, there are two coils. One is a current coil, other one is a pressure coil. So why it is called current coil? It has to allow the current. So it is a fixed coil through which current will be traveling. Okay. So smaller in length होना है. So the current coil का characteristics देखो एक बार. Thick in size, smaller in length. Smaller in length. So what happens to the resistance now? Now you please tell me, the resistance will be more for current coil or pressure coil? Yes, tell me. See here, this is a current coil. So this is a current coil picture. This is a current coil. So current coil will be thick in size. These are thick in size like this. The thick in size. So length will be shorter, area of cross section will be more. So resistance will be less. That's why more current. Whereas moving coil, see the features, try to understand. Fixed coil, ये है fixed coil. This is a fixed coil. So thick in size, smaller in length. Whereas a moving coil, thin in size and longer in length. Thin in size, longer in length. That's why the resistance more. Now how to use these connections? So whenever अगर आपने connections के बारे में सोच रहे, dynamometer wattmeter में दो connections possible है. So ये है current coil, ये है pressure coil, ये है load, ये है current coil, ये है pressure coil. So the problem here is, so where you are connecting? So the pressure coil can be connected at the front of the mains or at the back side of the mains. अगर ये pressure coil is connected at the front of this current coil, then it is called MC connection. What we call it as MC connection. Why? Because it is connected to mains. So it is called mains connected. What we call इसको हम क्या बोलते हैं? Mains connection. So it is main side connected. Main side connected.
अगर ये पर्टिकुलर प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू द लोड साइड, सो उसको हम बोलते हैं एलसी कनेक्शन. सो लोड साइड कनेक्शन, लोड साइड कनेक्टेड. समझ में आपको? सो देयर आर टू पॉसिबल कनेक्शंस, वन इज अ एमसी कनेक्शन, अदर वन इज अ एलसी कनेक्शन. सो इफ यू सी द एमसी कनेक्शन, the pressure coil is connected to the main side, current coil is going to the load side, so the error will be due to the current coil. And here in LC connection, the pressure coil is connected to the load side, so that's why error is going to be due to the pressure coil. ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है. ओके, सो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आने की चांस है, मैं डिटेल में आपको बताता हूं. सो एरर ड्यू टू एमसी कनेक्शन, इफ यू सी द एमसी कनेक्शन, it is connected to the main side. So what is the actual true power? The true power is the power consumed by the load. So that is a current passing through the load, IL, VL, cos phi. So true value is nothing but voltage power consumed by the load, that is VL, IL, cos phi. But power measured by the meter क्या है? In addition to this, it is also measuring this power consumed by the current coil. So measured value will be, in addition to the load power, it is also measuring the power consumed by the current coil. So current coil plus true value कितना होगा पूरा मिला के, power consumed by the current coil मिला के कितना होगा, I square R plus W true value. Okay, that means there is an error is coming. So this is the error, this is the error. Okay, error आ रहा है हमको. So what is the error? So in MC connection, this is the error, and the percentage of error we have taken. This is the error, and percentage of error we taken, measurement value minus true value by 12 into 100. So I square R VLIL cos phi. So MC connection is suitable at what? This is an expected question. So what is the error? I square R is the error. हम error को कम expect करते हैं ना, जनरली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर कम होना है. दैट मीन्स आईसीसी कम होना है. आईसीसी कम होना बोले तो क्या है, डायग्राम में देखो, अगर आईसीसी कम है तो आईएल भी कम है. दैट मीन्स स्मॉलर लोड करंट्स इट इज सूटेबल. स्मॉलर लोड करंट्स कब पॉसिबल है, विच स्मॉलर लोड करंट्स कब, देखो भैया दोनों में एरर है, दोनों में एरर है, ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों में भी एरर है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट की वजह से हमको चूज करना है भैया. देखो एमसी कनेक्शन कैसे चूज कर सकते, एमसी कनेक्शन इज सूटेबल एट, एमसी कनेक्शन इज सूटेबल एट लो लोड करंट्स. एरर कम होना बोलो तो दिस पर्टिकुलर करंट शुड बी लेस. सो स्मॉलर लोड करंट्स एंड हायर लोड्स के लिए, स्मॉलर लोड करंट एंड हायर लोड्स, अगर आपके पास ज्यादा लोड है, अगर आपके पास हाई रेसिस्टिव लोड है, उसको एरर को कम करने के लिए हम ये कनेक्शन यूज कर सकते हैं, एमसी कनेक्शन यूज कर सकते हैं. ये क्या कनेक्शन यूज कर सकते हैं, एमसी कनेक्शन चूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर आनंद कुमार, क्लियर हो गया आपको? चलो लेट अस गो फॉर नाउ एलसी कनेक्शन. सर दिस इज एलसी कनेक्शन, load side connected. Which side connected? Load side connected, LC connection. So load side connected, if it's connected this side, load side, so what is the true value, VLIL cos phi? What is the measurement value? Now see here, this side it is connected now, so this time this power plus this power, power consumed by the pressure coil, power consumed by the load, power consumed by the load is VLIL cos phi, that is the true value. लेकिन मेजरमेंट वैल्यू क्या है, प्रेशर कॉइल पावर प्लस लोड. सो व्हाट इज द प्रेशर कॉइल पावर, दैट इज V square by R, V square by R plus load. Now this is the error. So this time error is due to pressure coil. आप ध्यान से देखें तो whether it is LC connection or MC connection, whether it is LC connection or MC connection, the error is always due to the coil which is connected to the load side. Got it? Whether it is a LC connection or MC connection, the error is always due to the coil which is connected to the load side. Okay, so if you are expecting the error to be less, so if you are expecting the error to be less, where it is possible, pressure coil should be less volt, error should be less means VPC should be less, VPC should be less means current passing through the pressure coil should be less, current passing through the pressure coil is less. See, I am expecting VPC should be less means current IPC must be less.
If you are expecting IPC to be less, then automatically ICC should be more. ICC should means IL is more. समझ में आपको? अगर MC correction में क्या होता है ना, you are expecting VPC to be less. VPC to be less means IPC should be less. IPC should be less means I is equal to split into two parts. So current passing through the current coil should be more. Automatically current passing through the load should be more. అంటే MC connection is best suitable for larger load currents. Larger load currents कब possible है? For smaller loads. That is the induction point you have to understand. Sorry, I have to write this here actually. I should write this here. This MC connection, na? I should write this notation here. Here. So if you are expecting error should be less means, so this VPC must be less. Okay, so VPC must be less means what? That VPC must be less means current passing through the PC must be less. Current passing the pressure coil must be less means this current should be more. IL must be more. Why? Because current passing through the current coil only split into pressure coil current and load current, na? So if this is less means this should be more. And larger load currents are possible for smaller resistive loads. That's why this is the point. Is suitable for larger load currents. Larger load currents कब possible है? Smaller resistive loads के लिए possible है. जिंदा हो सब लोग, जिंदा हो सब लोग. सो रहे क्या? खाना खा के, पनीर बिरयानी खा के, मटर पनीर बिरयानी खा के सो रहे क्या? मैं इतना मेहनत करके इतना अच्छा स्लाइड, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपको. सिंगल रात में, एक रात में पूरा मेजरमेंट्स खत्म हो रहा है. क्या चल रहा है? जिंदा हो सब लोग. चलो प्रॉब्लम्स करने के लिए. चलो लेट अस डू द प्रॉब्लम्स नाउ. Try to answer this question. IIT Delhi 2004 का सवाल है बेटा. Answer please.
आंसर कितना आ रहा है? सी आ रहा है। सिंपल की बात है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कनेक्शन है ये कनेक्शन क्या है? एलसी कनेक्शन और एमसी कनेक्शन? इट इज कनेक्टेड द मेन साइड, सो इट इज एमसी कनेक्शन। So first let us calculate the true value. True value क्या है? VL IL, that is 220 amperes. He has mentioned in the question as no power factor. If power factor is not UPF, UPF means unity power factor. So it is 4000 watts. So what about the measurement value? MC connection na? Measurement value is in addition to true value. Which coil is connected? Current coil is connected. So power consumed by the current coil. So that is I square R of the current coil. So what is the true value? That is a 4000 plus current passing through the current coil, that is 20 square into resistance of the current coil 0.02. So this is 400 into 2 by 100, 4008 watts. So question पूछ रहा है percentage error. So percentage error is equal to measurement value minus true value divided by true value into 100. So measurement value कितना है? 4008 minus true value कितना है? 4000 divided by 4000 into 100, 8 by 400, 800 by 4000. कितना आ गया आंसर? 800 by 4000. 0.2%. Positive or negative? Positive आएगा because measurement value is more. So option C is the right answer. Option C is the right answer. Very good बच्चों. चलो, let us go for the next question. See this question. Try to answer.
हेलो, व्हाट इज आंसर यार? कितना आ रहा है? 0.15। इतना इम्पोर्टेंट, ऐसा पूछो तो मैं क्या करूं भैया? उसको रात में एक नींद में एक ड्रीम आ गया CRO के ऊपर। सो IIT प्रोफेसर को एक ड्रीम आ गया। सो इस साल IIT प्रोफेसर ने CRO पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं CRO इम्पोर्टेंट है? सिलेबस में है तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस कनेक्शन? दिस कनेक्शन इज कनेक्टेड टू द लोड साइड, सो LC connection. LC connection. So what is the concept here? The coils of a wattmeter have a resistance of 0.01 ohm. So this is resistance here not mentioned. So this resistance of the current coil is 0.01 ohm. So this RCC 0.01 ohm, and highest is the RPC. RPC is equal to 1000 ohms. Fine. Next, the inductance meter. The wattmeter is correct as shown in the figure to measure the power consumed, which draws 25 amperes at power factor of 0.8. So first of all, we will calculate the power consumed by the load, which is VL IL cos phi. So what is the VL? It draws 25 amperes. Cos phi power factor 0.8. Voltage across the load terminals is 30 volts. So this is the 30. So how much? 30 into 25 into 0.8 कितना होगा? 600 watts. So this is 600 watts. So this is the load power. Okay, next 600 watts. Next, what is the true power? This is the true value. This is the true value. So what is the measurement value? It is a true value plus power consumed by the pressure coil. So what is the power consumed by pressure coil? That is V square by R. So this is 600 plus this is V square by R. Okay, so 600 plus V square कितना है? 30 square. Resistance of the pressure coil कितना है? 1000. So 900 by 1000, 600.9 volts. 600.9 watts. So what is the percentage error? The percentage error will be measurement value minus true value by true value into 100. So this is 600.9 minus 600 divided by 600 into 100. .15%. The right answer is 0.15%. That's it. Chalo, let us go for the next topic, that is a three-phase power measurement. I think today we will complete the power measurement. One more session we'll plan for the energy measurement. So now we'll go for the 2 wattmeter method. So generally three-phase power measurement का concept क्या है? सिंगल फेज सप्लाई डोमेस्टिक में यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई इंडस्ट्री में यूज करते हैं. ओके, थ्री फेज सप्लाई विल बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बट a phase difference of 120 degrees. So if you take this a VRN, so this a VYN, so this a VBN. So these voltages are split into 3 parts. So this a VRN, VYN, VBN, split by 120 degrees. They're having a phase shift of 120 degrees. So what are the advantages of three-phase transmission? More voltage can be transmitted. Transmission of three-phase power requires less copper wire, less connections, economical भी है. Next, RMF भी most important है. Rotating magnetic field is possible in the three-phase missions. So three-phase supply is equal to 3 single-phase supplies. Three-phase supply is equal to 3 single-phase supply, but vice versa is not true. Do you agree that? Anurag Reddy, do you agree? Yes, constant power. Three-phase supply is equal to 3 single-phase supplies, but vice versa is not true. Do you agree it?
Suppose I have single phase supply like that. I have three symmetrical single phase supply. Will it be equal to three phase supply? Yes, that's the point. It's not equal. So now in three phase supply we are having majorly two models. One is a star model, other one is a delta model. So this is a star model and delta model. If you take the star model, so that is a RYB. So this is a delta model. Okay, RYB delta model. If a separate neutral line is present, 4-wire system hoga. This is a 3-wire system. So if you take conclusions for star model and delta model, what is the conclusion for star model? In star model, load current is equal to phase current, load voltage is equal to √3 times of the phase voltage, and line voltage leads the phase voltage. Am I right? Line voltage leads the phase voltage. Whereas delta model, IL is equal to √3 IPH, IL is equal to √3 IPH, VL is equal to VPH. Line current lags the phase current. Am I right? So these are the conclusions. Now now let us go for the 4-wire system. So 3-phase supply with a 4-wire system, that means not a separate neutral line is present here. A separate neutral line is present here. A balanced 3-phase supply, 4-wire system, that means there is a separate neutral line present here. There is a separate neutral line present here. So this is the RYB sequence. Now tell me how many wattmeters are required? Anand Kumar, a faculty ho na? Anand Kumar, you are faculty, right? अब कॉलेज में फैकल्टी काम करते ना? No sir, I am PW student. like that. From this topic there was a question in 2024. Yes. So now if you see here, if you use a 4-wire system, definitely I require. थैंक यू आशुतोष प्रहराज, ईस्ट इंडिया फैन है. ओके, साउथ इंडिया से कोई है फैन? चलो बहुत सारा फैंस हो चुका है मुझे. ओके, नो प्रॉब्लम. सो इफ यू सी दिस RYB sequence, so this is a Z, this is a impedance. So now here current coil, I am connecting wattmeter 1 here. So as the neutral line is present, as there is a separate neutral line, so all the pressure coils can be commonly connected here. So how many wattmeters here? Wattmeter 1 here, wattmeter 2 for the B line, wattmeter 3 for the Y line. Okay, so good evening Kumar, good evening. So now what is the wattmeter 1 reading? W1 is equal to VRN IR cos phi. Why? Because W1 is connected between what? Between this R and neutral. So the voltage is VRN. So pressure coil voltage is this. So W1 is equal to VRN and current IR cos phi. Next,
W2 is connected between BN. So W2 is equal to VBN IB cos phi. Next W3 कहाँ कनेक्ट हो चुका है? W3 that is YN VYN IY cos phi. So 3 वोल्टेज कितना होगा? सम अप करें तो 3 फेस पावर के लिए 3 पावर्स मेजर करना है. So W1 plus W2 plus W3 करेंगे. So that will become as 3 VPH IPH cos phi. 3 VPH IPH cos phi. ये क्लैरिटी होना है आपको. VRN VYN VBN is equal to VPH. VRY VYB VBR is equal to VL. IRN IYN IBN is equal to IPH. IR IB IB is equal to I. Line to line current, face to face current. Thank you, thank you. Good evening. So, but this is what general concept. But what is the concept of Blondel's theorem? What the Blondel's theorem is telling? The Blondel's theorem is telling for a 3-phase balanced 3-wire system. 3-wire means neutral line is not present. So for a 3-phase balanced 3-wire system, 2 wattmeters are sufficient. So 2 wattmeters हम कर सकते हैं. So that is what the balance theorem. So for an n-phase balanced system, if a separate neutral line is present, then n number of wattmeters are required. If a separate neutral line is present. If separate neutral line is not present, for n-phase balanced system, if a separate neutral line is not present, then n minus wattmeters are required. n minus 1 wattmeters are required. So balanced system में क्या होता है? Magnitude of voltage same रहता है, frequency of voltage same रहता है, magnitude of impedance भी same रहता है, phase of impedance भी same रहता है, type of impedance भी same रहता है. So you cannot use inductive. स्टार मॉडल में एक इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, नहीं. इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी, 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 सब कुछ सेम होना है. ओके वाह. चलो, now if you see this 3-phase, this is a 3-phase. So 3-phase balanced star model. So this is one impedance, this is another impedance, this is another impedance. So this is R Y B sequence. So now how many wattmeters are required? 2 wattmeters are required, W1 and W2. Why? Because there is no separate neutral line. There is no separate neutral line. So when there is no separate neutral line, one line I can use as a common line for both the wattmeters. So wattmeter 1 pressure coil is connected to B, wattmeter 2 pressure coil is connected to this. So what is the voltage for the wattmeter 1? So if you check the W1 is pressure coil is connected between R and B. So this is VRB, IR cos angle between VRB and IR. Okay, wattmeter 2 क्या है? Current between VYB, IY cos. Imran, are you there? Tillu, are you there? मर गया? जिंदा हो टिल्लू भाई, इमरान भाई. So these are the things. So to measure that I have to go for the phasor diagram. So W1 is this, VRB IR, W2 is this. So what is VRB? VRN minus VBN, VYB. So we will go for the phasor diagram. So this is the phasor diagram. So if you see the phasor diagram, so this is a VRN, so this is a VYN, this is a VBN. So I need VRB and IR. So this is the IR, so this is the IY, this is the IB. So for identity purpose, I will check the colors. So this is the IR color, so this is the IY color, so this is the IB color. Okay ba? So this is star model. Tillu bhai, are you there? Tillu, किधर गया रे टिल्लू? सृष्टि, इमरान,
आशुतोष, आनंद, रिंकू, कुमार, ओके सब लोग सो गए शायद। हाँ टिल्लू भाई अभी जाके शाही पनीर खा रहे हैं। हाँ वो बोलते हैं मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चा हूं, मैं आपका पूरा सेशन देखता हूं, आपका पूरा सेशन देखने के बाद मुझे क्वेश्चंस में आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा वेटेज है बोलते। मैंने बोल दिया, बहुत सारा डाउट्स पूछे उन्हें। हाँ सुन रहे, थैंक यू कुमार जी। मुझे पता है बच्चों का प्री एक्टिव इंटरेक्शन कैसे होता है, मुझे पता है। आरंभ शूरत्व बोलते हैं उसको। यस यस थैंक यू। ये फेजर डायग्राम आप प्रैक्टिस करना है। सो दिस वी आर इन फेज करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट लैक्स द फेज वोल्टेज इन स्टार, फेज करंट ओके। सो नाउ व्हाट इज आई रिक्वायर, VRB एंड IR आई रिक्वायर। सो VRB कैसा रहेगा, VRB कैन बी टेकन एज, VRB can be taken as what, VRB can be taken as VRN minus VBN. So according to that, so this is the VBN positive, negative कैसा आएगा, opposite से में आएगा minus VBN। ये दोनों का resultant है VRB होगा। Now this resultant is making an angle of how much with IR, if you check this total was 120, ये कट करे तो ये 60 है, 60 होगा, और ये कट करे तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, 30 से 5 को निकालो, 30 minus 5 बन गया। So this is 30 minus 5 हो गया। So this is 30 minus 5, this is 30 plus 5 for VYB। VYB कैसा आएगा, VYB कैसा आएगा भैया, VYB कैसा आएगा, that is VYN minus VBN। So again VBN का नेगेटिव है, ये दोनों का रिजल्टेंट VYB होगा, ये दोनों का बीच में एंगल कितना होगा, 30 plus 5 होगा। So now if I have used that expression, so W1 का expression VRB IY cos of this angle, so cos of 30 minus 5, so this is a W1 expression। W2 is VYB IY cos of this, so this is the W2 expression हो गया। So now W1 minus W2 कैसा होता है, that is VL IL cos of 30 minus 5 minus VL IL cos of 30 plus 5। So if you simplify this, we are going to get W1 minus W2 as VL IL sin 5। This is equation number 3। आप एक बार डेरिवेशन को देखो भैया आराम से। Who is this fellow mastering fundamentals? अरे ऐसा यूजर आईडी क्यों देते रे, आप ऐसा यूजर आईडी क्यों यूज करते, मास्टरिंग फंडामेंटल्स, फिनिशिंग फंडामेंटल्स, PhD इन फंडामेंटल्स, आपका नाम रखो ना। अरे आपका नाम रखने के लिए आप इतना सोच रहे क्यों। So W1 minus W2 कितना होगा, VL IL sin 5। So W1 minus W2 आ चुका है, next W1 plus W2 करेंगे। So W1 plus W2 is the same thing, if you do the derivation we are going to get root 3 VL IL cos 5। So this 2 gets cancelled here, this is 2, so this 2 gets cancelled, so root 3 IL, so that means W1 plus W2 भी मिल गया हमको। So अगर पूरा देखो तो आपको क्या हो चल रहा है। So this is a most important slide, एक बार देखो इस स्लाइड को, एक बार इस स्लाइड को देख लो भैया। ये स्लाइड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, आपका पूरा वाटमीटर का आंसर सब कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड से।
रख दिया। सो W1 प्लस W2 से VLI sin phi आ रहा है, W1 प्लस W2 क्या आ रहा है, √3 VLI cos phi आ रहा है, tan phi का एक्सप्रेशन भी आ चुका है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, सर हाउ टू बी कूल लाइक यू सर, यूज द कूलर, दैट्स इट। सो tan phi इज इक्वल टू √3 W1 प्लस W2 बाय W1 प्लस W2 हो चुका है। लेकिन इधर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि 2 वाट मीटर मेथड एंड 3 वाट मीटर मेथड से कंपैरिजन क्या करना है। सो इन 3 वाट मीटर मेथड मैंने 3 वाट मीटर्स यूज किया हूं, W1 W2 W3 यूज किया हूं। सो W का पूरा समेशन करें तो हमको क्या आ गया, 3 VPH IPH cos phi आ गया। ओके 3 VPH IPH cos phi आ गया। ओके सो इसके लिए 3 फेज पावर मेजरमेंट करने के लिए मुझे 3 वाट मीटर्स यूज करना पड़ा है इधर। लेकिन इधर देखो W1 प्लस W2 से क्या हो गया, √3 VLIL cos phi आ गया। लेकिन ये VL क्या है, VL कैन बी टेकन एज √3 VPH, दिस VL कैन बी टेकन एज √3 VPH, दिस फिर कम 3 VPH IPH cos phi। उसका मतलब क्या है, अरे यार 2 वाट मीटर से काम खत्म हो रहा है, ये 3 वाट मीटर्स यूज करना है। उसका मतलब क्या है, 1 वाट मीटर मुनाफा, 1 वाट मीटर प्रॉफिट। 1 वाट मीटर प्रॉफिट बोलते उसका मतलब क्या है, 2 मोर कॉइल्स आर रिड्यूस्ड, ज्यादा कॉइल से ज्यादा लॉसेस है। सो दैट इज वन पॉइंट। ओके समझ में आपको, दिस इज द पॉइंट। सो W1 प्लस W2 इसको 3 VPH IPH cos phi हो गया, दिस इज वन एडवांटेज। एंड द सेकंड एडवांटेज इज यू आर आल्सो गोइंग टू गेट रिएक्टिव पावर मेजरमेंट। आप 2 वाट मीटर्स यूज कर रहे, 1 वाट मीटर प्रॉफिट हो गया, 2 वाट मीटर से आपका एवरेज पावर का आंसर आ रहा है, इसके साथ आपको ये पावर भी आ रहा है रिएक्टिव पावर। देखो W1 प्लस W2 से आपको 3 VPH IPH cos phi आ गया विच इज एक्टिव पावर, एंड W1 माइनस W2 हमको क्या आ गया, VLIL sin phi आ गया। सो √3 इंटू W1 माइनस W2 क्या होता है, 3 VPH IPH, VL इज इक्वल टू √3 VPH ना, VL इज इक्वल टू √3 VPH, √3 मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से, 3 VPH IPH sin phi, दिस इज अ रिएक्टिव पावर। सो आपको रिएक्टिव पावर भी मिल रहा है बाय यूजिंग 2 वाट मीटर सब्ट्रैक्शन, एंड आपको एक्टिव पावर मिल रहा है बाय समेशन ऑफ 2 वाट मीटर्स। 1 वाट मीटर प्रॉफिट हो चुका है एंड नंबर ऑफ करेक्शंस भी इजी हो चुका है। दैट्स व्हाई 2 वाट मीटर इज मोस्ट फेमस मेथड। इसको आपको फंडामेंटली आपको पता है, रियल पावर का फॉर्मूला किलोवाट्स में रहेगा, रिएक्टिव पावर का यूनिट्स किलो एम्पियर वोल्ट kVAR होना, इधर रिवर्स में लिख दिया, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। So this is volt ampere reactive and this is apparent power volt amperes. Okay चलो now let us go for some conceptual things here. So हमको tan phi आ चुका है ना यहाँ, tan phi, so that tan phi we take here. So W1 VLIL cos of 30 minus phi, W2 VLIL cos of 30 plus phi, एंड यहां से tan phi निकालो, tan phi is equal to √3 W1 minus W2 by W1 plus W2. These 3 are the conclusions. ये कंक्लूजन से आपको थ्योरी बिट आने की चांस है, एक पक्का एक थ्योरी बिट आने की चांस है। क्या है देखो कमेंट्स, आई एम टेकिंग 5 पावर फैक्टर, W1 का रीडिंग क्या है, W2 का रीडिंग क्या है, एंड इसके कमेंट्स क्या हो सकता है। लेट अस टेक द कमेंट्स और रिमार्क्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल phi इज इक्वल टू 0, उसका मतलब है पावर फैक्टर इज यूनिटी। अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो W1 क्या होगा, सो दिस इज √3/2 VLIL, दिस इज √3/2 VLIL, दोनों सेम है। सो फॉर यूनिटी पावर फैक्टर यूनिट, सब कुछ इक्वल, यूनिटी 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 सब कुछ इक्वल, W1 इज इक्वल टू W2। सो अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो W1 इक्वल, यूनिटी है, W1 इज इक्वल, सब सेम है, W1 is equal to W2. This is a conclusion. समझ में आपको? Is it clear, my dear students? Is the conclusion is clear? Okay, this is first comment. Second thing, 30 degrees. Phi is equal to 30 degrees. Cos phi कितना होगा? 0.866 होगा, less than unity. So for 30 degrees क्या होगा? 30 minus 30 0 cos 0. This becomes VLIL. This 30 plus 30 60 होगा, that is VLIL by 2. इसका मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग बोथ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग इज ऑफ ऑफ द अदर। हाँ लाइक दैट क्लियर है। थैंक यू। ओके सो दिस इज like this.
like 60 degrees cos phi 0.5 reference. So I will tell why it is called reference. So here क्या हो रहा है, one of the wattmeter reading 0 हो रहा है. So one of the wattmeter reading 0 बन गया, one of the wattmeter reading 0 बन गया. Okay, 90 degrees cos 90 0. So this will be we are able to minus one of the wattmeter is negative. So उसका मतलब क्या है ना, if you take this 60.5 as a reference, if you take this 0.5 as a reference, 0.5 above positive, 0.5 below negative. So 0.5 above, if you check, you are getting the positive values. So these are the things you have to understand. 0.5 below, you are going to get the negative values. At 0.5, one of the wattmeter reading is 0. So if you remember, yeah, okay, correct. But overall these both are positive, this is negative, this is 0. समझ में आ गया? So उसके ऊपर questions देखेंगे अभी. So what is the concept? If power factor is 0.5, one of the meter is 0. Power factor is greater than 0.5, both are positive. If power factor is less than 0.1 is negative. If power factor is equal to 1, so W1 is equal to W2. समझ में आपको? यूनिटी को सेम है, RMG. Okay, relax. चलो, let us solve these questions now. IIT बॉम्बे में नहीं है रे भैया, IIT बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे में IIT है रे. चलो आंसर बताओ. 2005 का सवाल है.
आंसर कितना है 2 वाट मीटर्स विच आर कनेक्टेड टू मेजर। सब कुछ दिया है आपको, आंसर जल्दी बताओ भैया। टोटल पावर power factor, one of the wattmeter is negative, one of the wattmeter is negative, so 0.334, that's it. करने की जरूरत ही नहीं है, sir not, if you want you can do it. W1 is equal to VLIL cos of 30 minus 5, W2 is equal to VLIL cos of 30 plus 5, or tan phi is equal to root 3 W1 minus W2 by W1 plus W2. ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं आप। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन IISc बैंगलोर 2002 का सवाल है, जल्दी बताओ। So impedance दिया है 560, 560, 560. The line to line input voltage is given as 100 volts RMS. Assuming that the phase sequence is RYB, the wattmeter will root dash. So first of all you can find out. So VL is equal to given as 100 volts. So VL is equal to root 3 VPH. So VL by root 3 is equal to VPH, that is 100 by root 3. And ZPH is given as how much? 560. So what is IPH? IPH is equal to VPH by ZPH. So 100 by 560, that means 20 by minus 60. ओके IPH आ चुका है, IL इज इक्वल टू IPH। Gaurav Kumar ji, moving iron will measure the RMS value because the theta is coming proportional to V square. If you check that moving iron voltmeter derivation, half I square dl by theta is equal to kc theta. I can be written as V by R. So theta is proportional to V square. When it is proportional to V square, definitely it is going to measure the RMS value, whether it is a positive or negative pulse. So please check Gaurav. So I आ गया, so आप कर सकते हैं VLIL cos phi. आंसर क्या है उसका? सी होता है, क्योंकि cos 60.5, cos 60.5, 0.5 बोलो तो क्या है? वन ऑफ द वाटमीटर रीडिंग मस्ट बी 0. सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डायरेक्टली कर सकते हैं फटाफट। सृष्टि कैसे हो? यू आर माई PW स्टूडेंट राइट? आप मेरा स्टूडेंट है ना? अरे cos 60 रे, cos 60 पर तो 0.5 ना, 0.5 के लिए वन ऑफ द वाटमीटर रीडिंग मस्ट बी 0 ना। W1 क्या है? VLIL cos ऑफ 30 minus 5 है ना। 30 minus 5 बोलते 5 is equal to minus 60 ना। So 30 minus of minus 60, 30 plus 60 90, cos 90 0 हो गया ना। सृष्टि और मैं PW स्टूडेंट राइट? क्लासरूम स्टूडेंट है ना? ओके राइट राइट, चलो। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? IIT मद्रास 91 का सवाल है। हाँ पहचान किया मैंने।
Two identical wattmeters are connected to measure three-phase, three-wire balanced through the load power factor is dash. For W1 is equal to W2 means what? Cos phi is equal to unity. For unity power factor only they are same. Either W1, W2 is equal to 0 means cos phi is equal to 0.5. One of the 0.5 is super. Chalo. These are some questions. Okay. Now we'll go for energy meter. Thank you. So if you see the energy meter, so this is energy meter diagram. So in energy meter there are three types of magnets. The purpose of energy meter is to measure the energy consumed by a home, in an industry, somewhere like that. So single phase supply. So if you see there are three magnets. One is the shunt magnet, other one is a braking magnet, other one is a U-shaped magnet. So if you see this, the basic function of energy meter here is like this. Energy meter is nothing but energy is defined as power into time, power consumed over a period of time. So energy is measured in terms of units. Yes. Thank you very much. Thank you very much Rolex. गौरव कुमार, ये सिंपल की बात है, जहां जहां आपको फार्मूला में स्केयर आ रहा है ना, so that is suitable for RMS measurement. Moving iron हो, dynamometer हो. Sir, energy meter completes total 1 revolution. Yeah. जहां जहां आपको फार्मूला में स्क्वायर आ रहा है, that is suitable for both AC DC. That's what I told in the beginning. Deflection torque of the moving iron half I square dl by d theta. Deflection torque of electrostatic voltmeter half v square dc by d theta. अरे सतीश सर अमर रहे बोल रहे क्या? फायर सिंबल भी डाल दिया. मेरा आत्मा उड़ रहा है क्या? मैं पांडिचेरी से हूँ, तमिलनाडु सी के बॉर्डर में रहता हूँ. मेरे घर से जस्ट पैदल डिस्टेंस में हमारा समुद्र रहता है, बे ऑफ बंगाल का बॉर्डर. जी चलो. So 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. Energy meter is measuring units are kilowatt hours. Okay, so watt hour meters भी use कर सकते हैं, but basically we'll use kilowatt hour. Okay, so if you see the construction, थोड़ा सा construction के बारे में बात करेंगे. So this is the disc which is going to be rotated along the spindle. Okay, this is the spindle. So this is the disc. So above the disc we are having the pressure coil, below the disc we are having the current coil. But here there are three magnets. One is a shunt magnet which is M shape, other one is a braking magnet which is C shape, other one is a U shaped magnet like this. अरे यार क्या भैया आप क्या बोल रहे हैं? हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है. सो मोदी सर ने बोला हिंदी भी सीखो, मैं सीख रहा हूं हिंदी. ओके, थैंक यू. सुजल पटेल जी नमस्कार. नमस्कार जी, हैंडसम गाय ऑफ पीडब्ल्यू. सर को एक बार गिव द क्लैप्स बिकॉज वन फुल नाइट ही हैज टेकन सिंगल ट्रेच फ्रॉम 4 PM to 4 AM, द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द एंटायर फिजिक्स वाला में. So I'm very happy to see Sujal sir here in my live class. Sir, हम भी आपका what you say, we are also following your footsteps. लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम है, मेजरमेंट्स इतना देर नहीं चल सकता क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस है कल भी हिंदी का. But we are very much happy that seeing that Sujal Patel का classes. Okay, thank you sir, thank you very much. So if you see the energy meter में theoretical questions आने की chances ज्यादा है. इसमें 3 मैग्नेट्स है बेटा. एक M शेप मैग्नेट है, उसका हम बोलते हैं शंट मैग्नेट बोलते हैं.
और एक सी शेप मैग्नेट है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट बोलते हैं, और एक यू शेप मैग्नेट है, उसको हम बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, यू शेप मैग्नेट ही बोलते हैं। सो हियर टू कॉइल्स, एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए, पावर इनटू टाइम, पावर बोलते अगेन क्या चाहिए, V इंटू आई, ऐसा सोच लो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। सो हमको वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए एक कॉइल चाहिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए एक कॉइल चाहिए। सो प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड हियर, सो दिस प्रेशर कॉइल एंड दिस करंट कॉइल। अरे ये ऊपर नीचे का काम आता है, अभी ये सैंडविच हो गया, ऊपर से प्रेशर कॉइल का फ्लक्स आ रहा है, नीचे से करंट कॉइल का फ्लक्स आ रहा है। आपको सैंडविच पता है, सुजल पटेल सर को सैंडविच के बारे में बहुत अच्छा पता है। सो ये है एल्यूमिनियम डिस्क है, सो ये एल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर से हमको एक फ्लक्स आ रहा है, नीचे से एक फ्लक्स आ रहा है। सो एल्यूमिनियम डिस्क का हालत कैसा हो गया, अभी एल्यूमिनियम का हालत पूरा सैंडविच हो गया। सो नाउ क्या चलता है देखो इधर, सो यहां से आपको क्या आता है ना, फ्लक्स ड्यू टू करंट कॉइल आता है, यहां से ऊपर से नीचे क्या आता है, फ्लक्स ड्यू टू प्रेशर कॉइल, ऊपर से नीचे 5 pc आ रहा है, नीचे से ऊपर 5 cc आ रहा है। अभी देखो डिस्क का मजा क्या होगा, डिस्क रोटेट हो जाएगा। अरे अनुराग जी क्या पूछ रहे हैं आप, पहले तो हम गेट के एग्जाम में बारे में लिख वड़ा पाव सुप्रीमेसी। ओके 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 ओके, व्हेन विल डीआरडीओ साइंटिस्ट नोटिफिकेशन कम सर? मुझे पता नहीं भैया, मुझे कोई रिलेटिव्स नहीं है डीआरडीओ में, मुझे कैसे पता होगा? डोंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके जी, ओके राइट। मजा आ रहा है, देखो देखो सुजल पटेल सारे आने के बाद क्लास में मजा आ गया, थोड़ा एनर्जी आ गया, थोड़ा एनर्जी मीटर पढ़ाने के लिए कुछ से एनर्जी आ गया। चलो, so now this is 5 pc, this 5 cc, this aluminum disc could be rotating. So now here most important is the speed of rotation. The speed of rotation is given by n is proportional to E. The number of revolutions are proportional to energy consumed. So if you remove the proportionality, I am going to get K into E. So where K is called the energy meter constant, this is N by E. So this is revolutions, this is kilowatt hour, revolutions per kilowatt hour is a unit. So this is what we call as energy meter constant. What we call this as? We call this as energy meter constant. मजा आ गया सर? कॉपर शेडिंग बंद का काम क्या है? अरे कॉपर शेडिंग बॉन्ड इज, अगर ये जो फ्लक्स आ रहा है ना एम शेप मैग्नेट से, एम शेप मैग्नेट से जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स सफिशिएंट नहीं है, ज्यादा फ्लक्स देना है, सो उसके लिए कॉपर बैंड यूज कर सकते हैं। कॉपर बैंड एडजस्ट करने की वजह से एक्स्ट्रा फ्लक्स आते हैं। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इफेक्ट समटाइम्स, इतना बड़ा बड़ा मैग्नेट से एनर्जी मीटर में, इतना बड़ा बड़ा मैग्नेट से क्या होगा ना, वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, द एल्यूमिनियम डिस्क कैन नॉट बी रोटेटेड फ्रीली, एल्यूमिनियम डिस्क कैन नॉट बी रोटेटेड फ्रीली। सो इसको ज्यादा फ्लक्स चाहिए, ज्यादा फ्लक्स के लिए मुझे 5 pc को बढ़ना चाहिए। 5 pc को बढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा कॉइल अटैच करूंगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड्स। वो कॉपर शेडिंग बैंड्स को मैं ऊपर लगाऊंगा, सो एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा, दैट एक्स्ट्रा फ्लक्स एक्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ गया? चलो, दैट्स व्हाट इन द पिक्चर इट इज क्लियरली मेंशन। नाउ लेट अस फोकस ऑन द आंसर। व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ बेटा। If energy meter disk makes 30 revolutions in 200 seconds, when a load of 850 watts, 30 revolutions in 200 seconds, when a load of 850 watts is connected to the meter, the meter constant is there. जल्दी बताओ। अरे आपको मिलेगा, अगर आप मेरा लाइव क्लास में अटेंड हुए तो पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नॉट विजिबल कंप्लीटली, क्या है क्वेश्चन में, क्या कितना क्लैरिटी दिख रहा है? इफ एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 30 revolutions in 200 seconds when a load of 850 watt is connected to it, the meter constant is dash.
अनुराग क्वेश्चन नॉट क्लियर है? देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 30 रिवॉल्यूशंस इन 200 सेकंड्स, 30 रिवॉल्यूशंस in 200 seconds. Time is 200 seconds. Okay, when a load of 850 watts, so power is given as 850 watts connected to the meter, constant K is asking. What is he asking? K is asking. So first of all, now visible. Okay, so energy is equal to power into time. So first you calculate energy. Energy is equal to power in time. So this is 850 watts. This is 200 seconds. So मैं क्या करता हूँ, I will divide by 1000. So this watt will become kilowatt. This seconds को I will divide by 16 to 60. Then will become hour. So क्या होगा अभी, 850 by 1000, 200 by 16 to 60. So क्या होगा इसका आंसर, 850 डिवाइड बाई 1000. अरे जल्दी बताओ ना. .0472 आ रहे हैं ना, 0.0472 किलोवाट आवर आ रहे हैं. am I right? Any mistake have done? .0472 kilowatt hour. So n is equal to k into e. So n is equal to k into e. इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ गया भैया. k is equal to n by e होता है. So n कितना दिया है, 30 revolutions divided by 0.0472 kilowatt hour. कितना होगा आंसर, 636 आ रहा है ना, 635. am I right? Yes. चलो, let us go for one more question. What is the answer for this question? Answer please. $690 आ रहा है ना. चलो, so energy limit is change make to 100 revolutions. So n is equal to 100 revolutions for 1 unit of energy. So energy is equal to 1 kilowatt hour. Calculate the number of revolutions made by the disk. Oh, this is k. N is equal to k into e, k is equal to n by e. So 100 revolutions per kilowatt hour. This is the ideal scenario as per the data. When connected a load of energy, current is 50 amperes, V is equal to 230 volts, cos phi is equal to 0.6. So first let us calculate the energy. Energy is equal to power into time, my dear.
So power VI cos phi into time. So when time is not given, you can take 1 hour. For 1 hour is given. So V कितना है 230 है, करंट कितना है 50 है, दिस इज 0.6 वाट्स आएगा, डिवाइड बाय 1000 करो, किलोवाट आएगा, टाइम कितना है 1 आवर, सो किलोवाट आवर में आएगा. सो दिस इज द एनर्जी. सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, N is equal to K into E. So K is 100 revolutions by kilowatt hour. एनर्जी क्या है 230 into 50 into 0.6 divided by 1000 into kilowatt hour. सो अब आंसर बताओ जल्दी, कितना आएगा आंसर, 690 रिवोल्यूशंस आएगा. 690 इज राइट आंसर. मजा की मजा, सुपर. चलो लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. Answer this. चलो ये दिस इज what we call creep error. What do you mean by creep error? Any idea? So creep error का importance क्या है? What is called the creep error? See here. What is creeping error? Creeping error क्या है? The slow but continuous rotation of energy meter which only pressure coil is excited but no current flow through the current coil is called creeping. That means what? प्रेशर कॉइल को आ रहा है लेकिन करंट कॉइल को करंट नहीं आ रहा है. कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग अ जीरो बल्ब इन आवर बाथरूम्स, okay, so generally we won't expect much readings for that zero bulb, but sometimes what happens, the pressure coil is having more flux because of your copper shading bands, it is having more flux, current coil is not getting the current, so pressure coil से flux ज़्यादा आ रहा है, current coil से zero आ रहा है, then there is a slow movement is possible. Actually power का consumption कैसा होता है? VPC ICC cos phi. सुन रहे ना इमरान भाई, कहाँ से आया? सृष्टि शरण कहाँ से आया? सो जल्दी सुनो भैया. सो पावर कंज्यूम करने के लिए हमको क्या चाहिए? VPC चाहिए, ICC चाहिए. लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, so when a low load is present, current pass in the current coil is almost zero, but because of the flux due to the pressure coil, that rotation is happening, slow rotation. Now suppose current travels now because of this current coil again a flux comes, now the rotation will increase, so already slow rotation हो रहा है, उसको extra rotation add हो जाएगा. Okay, so the slow but continuous rotation of energy meter which only pressure coil is excited but no current flow through the current coil is called creeping. So this error may be due to excessive friction compensation, excessive voltage supply and stray magnetic field. Okay, so that question is asking. So now let us see here this question. So the creeping error is happening here. So the disk of a house service energy meter, so what is given? V is given as 230 volts. This is given as 230 volts. Single phase, frequency 50 Hz, current is equal to 5 amperes. Okay, and K is equal to 2400 revolutions per kilowatt hour. That is the K. Creeps at 1 revolution per minute. So 1 minute, 1 revolution is a creep.
So for 1 hour means 60 minutes. So for 60 minutes there will be 60 revolutions. So this is with creep. Okay, 60 revolutions. The creep error is asking. So power factor is equal to 1. So first of all, N is equal to K into E. E is equal to power into time. So K into VI cos phi into time. Okay, so now let us take here. K is given as 2400 revolutions per kilowatt hour into V, that is 230 volts, and the current 5 amperes, cos phi, that is equal to 1 divided by 1000, time 1 hour. Time 1 hour, because here we are taking 1 hour, here I am taking 1 hour. So kilowatt hour gets cancelled, 1000 gets cancelled, 10 gets cancelled, 4 5 23 24 कितना आ रहा है? How much you are going to get? Check it. $2,760 revolutions आ रहा है. So which is the true value? This is the true value. But measurement value क्या होगा? So measurement value, N measurement value will be N true value plus N creep भी होगा ना? N creep. So creep is already there. Excellent. Excellent. Already there. True value कितना है इधर? 2760 revolutions plus 60. So कितना होगा? 2820 revolutions बनेगा. So percentage of error is what? Measurement value of the speed minus true value of the speed by true value into 100 होगा. So measurement value कितना है? True value कितना है? %2.173. 2.173%. पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. ऑप्शन सी. These are some good quality questions. Good quality questions. So आप ये थ्योरी पार्ट आप पढ़ सकते हैं. मैंने मटेरियल भी करेक्ट कर दिया. ओके. So these are the एनर्जी मीटर एरर्स. क्या क्या एरर्स रहता है, स्पीड एरर क्या है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, एक बार आप देख सकते हैं. ये एरर्स के बारे में थोड़ा थियोरेटिकल है एंड इसके ऊपर समटाइम्स हमको थ्योरी क्वेश्चंस आने की चांसेस है. हमको थ्योरी क्वेश्चंस आने की चांसेस है. ओके डियर. Yes. Enough. So with this I am closing the electrical measurements part. When time permits I will take electronic measurements. Electronic measurements means CRO, Q meter, DVM. So these are the major topics. Almost हमने 7 बजे को स्टार्ट किया सेशन. अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे. ऑलमोस्ट लगभग 4 घंटे के ऊपर हमने पार्ट पढ़ाया. अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं.
Okay, electronic measurement parts we'll cover in another session. Anybody need doubts, you can ask me. इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बहुत लेट हो रहा है, कल मुझे भी बहुत क्लास है. ओके, गेट पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? पहली बार रहा हूं, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है. नॉट फिक्स्ड ब्रो, फिर भी यार कोई आइडिया? कंपनसेटिंग कॉइल इफेक्ट्स ऑन इम्पिडेंस थोड़ा बता दीजिए सर. अभी इलेक्ट्रॉन मेजर स्टार्ट हो गया सर. मोर क्रीपर लॉस इन प्रेशर कह लो के सर, बताइए क्या बोल रहा हूँ. नंबर आपको 30 मार्क्स आए तो 30 प्लस इज द क्वालिफाइंग मार्क. 30 प्लस इज द क्वालिफाइंग मार्क. ओके, so next we will plan one more session on electronic measurements. Maybe tomorrow we will plan electronic measurements. Okay, enough for today. Thank you. Thank you. Thank you for listening this session. Good night. Good night. Thanks for your all response. I hope all of you enjoyed the session. Okay then. Shall I close it? Yeah. Thank you. Thank you very much. Bye. Please share your feedback after the session also. Please write the comments. Definitely will enjoy coming sessions also. Thank you.